लंच के बाद स्ट्रीम में वापस स्वागत है। मेरा नाम है केटोस 90 और आज वापस लंच के बाद ये जहाँ पे छोड़ा था उधर से ही शुरू करूँगा। तो उससे पहले थोड़े लिंक्स वो सब भेजने हैं मुझे, क्योंकि ये यूट्यूब है, ट्विच नहीं। हर एक स्ट्रीम का लिंक एकदम सेपरेट होता है, तो ध्यान पे रखना पड़ता है उसका। सब कुछ हो गया, स्टार्ट रिकॉर्डिंग और फिर लोड करते हैं अब। चलो, रथरफोर्ड की मदद कर दी, अब मार्था की भी मदद करते हैं यहाँ पे। Ah, Clive. Just the man I was hoping to see. Oh? And why is that? You remember how some of Sir Wade's guardians took up residence here after the Akashic attacked? Well, now the rest have come to join him. Seems their barracks in the Lazarus have been lost to an ether flood. Now, I don't mind having a few more brave boys around to keep them animals at bay. I ain't daft after all. But we ain't got nowhere for 'em to bed down. Poor buggers are having to make do with haylofts and chocobo pens. I'd build 'em a new barracks here if I could. But where would I put 'em? There just ain't enough room up here on the rock. Which leaves us in a bit of a pickle. The people we're counting on to keep us safe are living like beggars. I see. And it isn't just that lot. There's bears to think about too. There's been more and more of them turning up lately, coming from all over looking for safe haven. But there's only so many we can shelter with the room we've got. We can't keep cramming more and more people into less and less space. What we need is a new home for our new arrivals. And that's what I was hoping you might help me with. If it ain't too much of a burden, of course. It's no burden. Thank you, Clive. So, where were you thinking of making this new home? Well, I reckon we could do a lot worse than Eastpool. Eastpool. It's been a long time since I thought about that place. It was a tragedy, what happened. And if any of us could have done anything to stop it, we would have. But what's done is done. And those who lived there wouldn't have wanted the village they loved to be left in ruins. I suppose you're right. The blight might be pressing in, but I reckon it's got a good few years left in it yet. There's just one problem. A band of cutthroats have made it their den, and they don't seem like they'll be moving on in a hurry. Nasty bastards they are too. I've lost some good men to their raids. Would have sent someone to clear 'em out sooner, if my boys didn't already have their hands full fending off the Akashic. But now we've got a few more guardians of the flame to call on. I reckon it's time we made our move. What do you say? Fancy leading a raiding party? I do. Eastpool was once home to people I loved. I won't have bandits sully those memories. I'll gladly drive them out of there. And I know the men will gladly follow you. I've already shared a few thoughts with Sir Wade about how we might be able to win the place back. And I dare say he's got some ideas of his own too. Why don't you go and talk to him? Of course. Rekindling the flame. Oh, बात करता हूँ। Reckon Eastpool would make a nice little home for a few bearers and guardians with a mind to make a go of it. Once those blasted bandits have been sent packing, that is. All right, Sir Wade. Let's hear your plan. देखते हैं हमारे अंडर ही था, चेला नहीं बोल सकते इसे, हमारा पुराना सोल्जर। चलो, इसके क्या प्लान्स हैं? Sir Wade, it's good to see you well. And you, Lord Rossfield. And you. I spoke with Martha. She tells me you have plans to free Eastpool and make it your own. That's right, though it was mostly her idea. I rather fear my men have been treading on her toes somewhat since joining us, not to mention each other's. And then there are the bearers, men and women who found the courage to flee their masters and sought refuge here. We need somewhere to settle them, and I can think of worse places than Eastpool. As can I. Which is why I agreed to help you win it back. That's very kind of you. I'd be most grateful if you would. With you beside us, we shall soon send that rabble of rogues running for the hills. So, what can you tell me? That thankfully there aren't too many of them.
Fewer than a dozen at our last count. And rather less, thankfully. The road that leads there will more than likely still be crawling with Akashic. A small force would suffice to clear the village, but if the Akashic were to follow them in, that force could end up trapped between a rock and a very hard place indeed. I'll head into Eastpool and deal with the bandits. You and the Guardians can stay outside the village and fend off any Akashic who come too close. Make sure I'm not taken unawares. I can't ask you to bear all that risk yourself, my lord. The Akashic are the bigger risk. I can handle a few bandits. Well, if you're sure, I shall summon my men at once. Shall I wait for you here? No need, my lord. You go on ahead. We'll be with you before long. All right. I'll meet you at Eastpool then. We shall see you there. And may victory await our coming. मुझे लगा यहाँ पे नहीं रुकेगा, इससे थोड़ा एक और डायलॉग कुछ सुनने को मिलेगा, पर नहीं। हाँ, कोई है इधर? यस, ईस्टपुल ऑब्लिक्स। पूरा जाना नहीं पड़ा, धन्यवाद। चलो, यहाँ पे बैंडेट्स को मार देता हूँ मैं। मेगा फ्लेयर के साथ शुरू करूँगा और थोड़ा हील भी कर दूँगा मान में। You think you can just walk in here? Yes. Kill him. You will leave Eastpool now, or face the consequences. और अरे यार, क्या ये मरा? बड़ा वाला बंदा कौन होगा इसका? इसको इतनी लग रही क्यों नहीं है? मतलब क्या इसके वजह से शायद। उसने उसका डिफेंस बढ़ा दिया शायद। हाँ। That's the end of that then. Or maybe not. Two What's that scoops. thing doing here? Doesn't matter. It goes too. Heal. पीछे जाओ। Oh shit. Heal. Nice try. इतना आसानी से नहीं करने दूंगा। हील कर दे फिर से। और इसे थोड़ा मार दे। और ये गया ना। इसे मौका भी नहीं मिलेगा। या फिर शायद मिल जाए इसे मौका। यार थोड़ा। ओह शिट। जाओ 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 जाओ। पचास पचास। मारते जाओ। नाइस नाइस नाइस। फिर से 50,000 के इतने पास पहुंच रहा हूँ मैं। अपने हाई पोशन नहीं यार, नॉर्मल पोशन इस्तेमाल करना चाहिए था। हमला कर दे थोड़ा। आजा। दो हो गए और ये ले मेगा फ्लेयर। मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ। वो शुरू करने से पहले ही मर गया। इग्निशन। Any more surprises? I'll take that as a no. Bravo. A magnificent display, my lord.
You were watching. I thought you were keeping an eye out for a Kashik. We were. Put down more than a few on the road, then arrived just in time to see you slay that... whatever it was. 2 scoops. Let's hope it was the last of its kind. Though I expect you and the Guardians will be up to the challenge should another appear. I would hope so, my lord. Your men will be bringing the bearers who'll be living here, I assume. It might be best to send word for them to come right away, before any other unsavory characters move in. Of course. I'll send orders for them to depart immediately. Leave it with me, my lord. सही है पहले बेरस रहते थे अब फिर से बेरस रहने लग जाएंगे यहाँ पे Without masters. No. We're the masters now. Our lives are our own at last. That's all of them. And not a single Akashek in sight. Now to begin the important work of rebuilding the place. It won't be easy. Especially not after 5 years of beasts and blackguards having their wicked way with the place. The masonry might still be sturdy enough, but half the beams are rotted. Those that weren't lost in the fire or burned by the bandits, that is. It'll take a bit of elbow grease, but we'll see Eastpool rise again. Just you wait. So wait. Lady Hannah is buried here. If you don't mind, I'd like Oscar to join the rebuilding efforts. He should be a part of this. Of course. I couldn't agree more. I'll let Martha know that everyone arrived safely. If you need anything more, you have only to send a Stolas. And we will, my lord. Safe travels. Eastpool is in safe hands. Time to go and tell Martha the good news. First things first, we'll need to get a few of these roofs seen to. Wouldn't want to be caught in a storm without any shelter. 5 साल से कोई रह रहा नहीं है उतना कोई क्या मेंटेनेंस नहीं चल रहा पर फिर भी काफ़ी अच्छे जगह पे है ये ईस्टपुल ऑफ कोर्स इसलिए अच्छी जगह में है क्योंकि वो मेरे हिसाब से बनाना नहीं चाहते थे एक सेपरेट मॉडल ये घर वो सबका टूटा फूटा So this is our new home, is it? यस इट इज़ देखता हूँ क्या सोच रहे हैं ये बेरस Well, there's a lot that needs doing, and no mistake. We'll have to fatten the bearers up a bit so they can pull their weight and actually make a difference. ये सारे ऐसे झुके हुए हैं यार अरे नहीं पर काफ़ी जो भी एक क्या बोलते हैं ना गार्डियन ऑफ द फ्लेम के पास है जो भी I'd better get this well back in working order. If we're gonna live here, we'll need something to drink. ओके ये कुछ बोल रहा है ना चलो ये हो गया माथा से बात करता हूँ फिर ये अपने पोशंस वो सब फिल अप करता हूँ थोड़े बहुत इस्तेमाल हुए क्योंकि और उसके बाद The Guardians of the Flame were true friends to the rest. They fought our enemies, manned our barricades, joined us on our patrols. Now they're gone. I suppose it's back to double shifts. मैं क्या बोल रहा था मैं भूल गया चलो जो भी हो माथा से बात करनी है और फिर अपने पोशंस भरने हैं Ah, there you are. All went well then. Sir Wade told me you got rid of the bandits while his lot kept an eye out. Nicely done. And what's all this about some shape-shifting nightmare showing up? On second thoughts, don't tell me. It'll only give me nightmares of me own. What matters is you did it. And now we can build our new village. I suppose it will be. What will you call it? What else? Eastpool. Sir Wade said it best. There's plenty bad happened to that place, but that don't undo the good that happened there. No need to throw the baby out with the bathwater. Did Wade say that? Well, something along those lines. Anyway, the poor souls might have made it to Eastpool, but their work ain't done yet. So the way I see it, neither is mine.
If it's food or lumber or strong backs they need, the rest is ready to provide it. Thank you, Martha. No, thank you. You didn't have to help us. I wanted to. ये हो गया। इसके बाद क्विंटन का करूँ या देखता हूँ कहाँ कहाँ है और कहाँ पे है साइड क्वेस्ट। East Pool's been in ruins for years, so wonder any of it's still standing. But with a bit of lumber, a lick of paint, and a lot of hard work, they'll make a home of it yet. ओके पहले मैं डायरेक्टली फास्ट ट्रैवल करने वाला था। पहले पोशंस खरीदना है मुझे। जो भी नया है What are you after? ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं होगा वैसे भी। ब्रेथ ऑफ लाइट, ये पहला वाला है। सैटेलाइट, पता नहीं सैटेलाइट इस्तेमाल कर रहा भी हूँ कि नहीं। Much obliged. सेल, यस। That all, is it? मैं कौन से इस्तेमाल कर रहा हूँ? फ्लेयर ब्रेथ, गीगा फ्लेयर। सैटेलाइट बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ मैं। सैटेलाइट बल्कि लिया भी है कि नहीं मैंने? नोप। Summon multiple light aspected familiars that attack any enemy on which Clive uses magic. I mean ये बुरा नहीं है, पर ये वो इस्तेमाल करेगा तो ना, ये ज़्यादा अच्छा है जो मैंने लगाया है। रामू टाइटन बहामुत, बहामुत नहीं। और वैसे भी ये हो गया यहाँ का साइड क्वेस्ट। यहाँ पे 3 दिख रहे हैं मुझे। ये इस तरह का देखो तो यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे लॉस्ट विंग। ये आखिरी के लिए रखूँगा मैं। अभी के लिए यहाँ पे 2 है ना टैबोर में, तो ये 2 करते हैं। नियर बाई एक्टिविटीज देख सकता हूँ यार, भूल जाता हूँ। इसके पास क्या नया है? Here, take a look at my wares. यही होगा ना? मैं क्या खरीद रहा हूँ मैं? Take care. चलो साइड क्वेस्ट शुरू करते हैं। कारल टैनर। Is that blade for hire, perchance? Because I have a mind to make a killing. Figuratively, I hope. Well, yes and no. A passing caravan carried with it a rumor most fortuitous for one in my trade, that an elder Dread Evis had been sighted in the fields of Karava. Dread Evis are aggressive beasts. Compelled as they are to acts of violence, few survive to maturity, but those that do develop a hide of phenomenal value. A hide you want to sell? Eventually, yes. Though I would have it tanned first that it might be crafted into marvels the likes of which the world has never seen. Dread Evis skin is a rare thing indeed. But the worked hide of a well-aged beast, now that would fetch such coin that Gilbert himself might weep with envy. Bring me that beast's skin and I will share with you the bounty of our combined labors. All right. I'll hunt your Evis. Of course you will. When one lives in such troubled times, it is a fool who lets opportunity slip his grasp. Leave Tabor through the east gate, but take the path that branches west. Once you reach the checkpoint at Tovany, you are a mere stone's throw from the fields of Karava. I eagerly await your safe, and above all, triumphant return. Skin trade, prioritize quest, और damn it, काफी दूर है ये। A fortune in skin and scale awaits any man with a will to claim it for his own. Leave Tabor by that path and venture west. The ancient beast roams the fields of Karava, not far from the Tovany gate. Okay. चलो जाके उससे लड़ते हैं। ड्रेड एविस, आजा यार, क्यों नहीं आ रहा ये समन?
Jacobo summon. Ah, Lord Rossfield. I'm afraid I cannot stay to talk. I must leave to collect the reports of our spies in the field. पता नहीं ये नया Now डायलॉग that है कि you नहीं. wear the phoenix down, our brothers and sisters will no doubt reveal themselves to you too. Farewell, my lord, and may the firebird's flame burn ever in your heart. The free city's under siege. Who'd have thought it? Master Cyril, luckily. Okay, ये सुन चुका हूँ. इस तरफ जाना है ना? हाँ. चलो. 560 यार्ड दूर है अभी भी. 550 से कम हो गया जब तक मैंने वो बोला. फिर सर में काफ़ी दूर है वो. उधर एक और होना चाहिए था यार. ऑब्लिक्स और मोस्ट प्रॉब्ली है शायद. उधर गया भी हूँ कि नहीं पहले पता नहीं. शायद गया नहीं हूँ उधर पूरा, इसलिए ऑब्लिक्स उधर का ढूंढा नहीं है अब तक. डेफिनेटली नहीं गया हूँ मुझे. ओह यार. Enough of you, are there? ये रहा ना. नहीं गया था, पहुंचा था यहाँ पे पहले, इसलिए ये ऑब्लिक्स अब तक मिला नहीं था मुझे. Ravaged. अभी के लिए बंद है ना ये. एक बार देखूं तो ये क्यों बंद है. You lost, stranger. Wherever you're headed, it's back the way you came. ओके कुछ बोल रहा नहीं है क्यों बंद है ये. मोस्ट प्रॉब्ली किसी साइट को इस्तेमाल पड़ेगा हमें. Ready, go? अभी के लिए जाके वो ड्रेड एविस से लड़ते हैं. यहाँ पे आया हूँ. यहाँ पे मैंने एक गर्ल को मारा था और एक या फिर 2 हंट बोर्ड भी किए थे मैंने. ये रहा कर्ल. नहीं ये स्टॉर्म पैंथर है, कर्ल नहीं. हाँ वेल वो भी स्टॉर्म पैंथर ही मारा था. इधर कहीं पे था ना वो कर्ल. उधर था या फिर वो भी स्टॉर्म पैंथर ही था क्या. ये रहा ड्रेड एविस. Yeah. Maybe. It looks like there's still plenty of fight in him yet. Yeah. इतना आसानी से नहीं. ओह इतना आसानी से नहीं. नहीं बहुत जल्दी कर दिया मैंने. मेरी गलती थी वो. मैंने डॉज को ज़्यादा ही जल्दी कर दिया. मारते जाओ इससे. 15, 20, 25. ये नहीं करना चाहिए था शायद. डेफिनेटली नहीं करना चाहिए था. मुझे पहले फ्लेम्स ऑफ रिवर्स कर देना चाहिए था, उसके बाद दूसरे के लिए जाना चाहिए था. वो बहुत समय लगाता है. नहीं ये नहीं पहले. बहुत कम डैमेज होगा इससे यार. चलो मर तो गया. मैं एक और करने के लिए तैयार था स्किल. बहामुत का वो फायरी ब्रेथ. The thick scaled skin of an avis claimed by some to be as old as the mountains themselves, though it has most likely seen but a decade or two. This thing reeks. The sooner it's off my hands, the better.
फास्ट ट्रैवल करता हूँ यार, कौन जाएगा पूरा चलते हुए पिछली बार की तरह। चलते हुए नहीं क्या, बस समझ में आता है जो बोल रहा हूँ। चौकोबो, हमारा चौकोबो चला था हमारी जगह। Here's your hide, as requested. I worried you might never return. Quickly, let me see it. Oh, as supple as a maiden's cheek, yet as adamant as her virtue. This is everything I had hoped for, and more. Clearly, my trust in you was not misplaced. You must be a hunter of considerable talent to have bested the beast with nary a scratch. Join me as my honored partner. With my means and your might, we shall be as wealthy as the merchant kings of Zemeckis. I don't plan on making a habit of this. I'm busy enough as it is. Very well. Though I believe fate had a hand in our meeting, it would be unbecoming of me to beg. Do not allow me to keep you from being about your business. Here, for the hide. क्या दिया इसने? Bloody hide, saw. Guaranteed वो उसका हाइड नहीं था पर ड्रेड एविस का। This is hide unlike any I've had the pleasure of handling. My clients will pay a fortune for the merest scrap. वेल हमने उसे अभी अभी दिया, उसे एक्चुअल हाइड में पूरा लेदर पूरा में कन्वर्ट करने में समय लगेगा। हाँ, ओह यहाँ पे अंदर भी है। Feel like I've fleshed 100 skins today. Stay focused, will you? One slip with that scraper and the hunter's hard work will be for nothing. ओके, यहाँ पे नहीं है तो फिर एक और जगह है क्या जिसके अंदर जा सकता हूँ? Stand back, friend. You don't want to get this stuff on you, believe me. कहीं पे दिख रहा नहीं है मुझे। ओ ऊपर है शायद। हाँ ऊपर। Careful how you pack that leather. Any creases or scratches will bring down the price. लेदर वर्कर। यहाँ पे पूरे इतने ज़्यादा लोग हैं और ये और भी ऊपर जाता है। वाह भाई वाह, मैं सोचा था ये इतना छोटा सा यहाँ पर है, बस नहीं काफ़ी है यहाँ पे चीज़ें। You there, the strapping lad with the sword. Milos, antiquarian. Finally, no one was paying me the slightest heed. Is something wrong? At the university, the students would hang on my every word. Sadly, this far from home, I'm just a vagrant greybeard. The university? You're a scholar. A specialist in ancient cultures. The most accomplished in all Valisthea, some have said. Not that I look the part in these tattered rags. In my heyday, no obstacle could have kept me from my studies. Yet here I am, a wizened windbag, bested by the many steps of Tabor. The answers I seek lying just beyond my enfeebled reach. Would you do an old man a kindness and brave the stairs in my stead? You'll be amply rewarded, of course. Climb the stairs and memorize a few inscriptions for me, assuming you know your letters, that is. Some courteous soul left clues to Tabor's rich history into stones dotted about the village. 3 of them, to be precise. 1 each to the north, south, and east. I'm here in the hope that those carvings might shed light on a riddle I've been pondering for some time.
namely the otherwise undocumented origins of Tabor's unique people, people quite unlike those of neighboring lands. I can't promise I'll remember everything perfectly. Remember what you can. I'll piece together the rest. Make for the domed pavilions, and you'll have no trouble finding the stones. Carved in stone. Hopefully कोई इन्होंने क्या बोलते हैं डेव्स ने कोई पीछे लोर बनाया होगा इस क्वेस्ट के लिए कि क्या पजल एग्जैक्टली ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है या सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है. If it wasn't for those domed roofs protecting the stones from the elements, the truth of Tabor's history would have been lost centuries ago. एक ये रहा, एक वो रहा और तीसरा पता नहीं क्या है. पहले ये पढ़ लेता हूँ. No idea क्या बोल लिखा है यहाँ पे. Guardians of the crystal, the first stones of Tabor, sacred holy thigh noble blood till ends the mother's labor. Okay. No history would be complete without mention of the mother crystals. ये एक है. So it's these stones to Canva and the rest of the boxes to Dalamil. दो goblin coins भी हैं यहाँ पे. वो ओके दो तीनों मिल गए मुझे. Not a scratch on them. These hides will fetch a good price. Have you noticed the elder has been coughing less of late? Yes. I hear Master Cyril drew up a new tonic for him. Wanderers of the Golden Plains, lay your roots in stone. With pride recall thy noble past and make these rocks our home. What golden plains might the wanderers have called home, I wonder? Mummy made a pottage from it. Sounds delicious. Perhaps she'll invite me around to try it next time. Oh, ये इसे कोट करने की कोशिश कर रहा है. That mark. You must be Lord Rosfield. A pleasure to make your acquaintance, my lord. I, too, am a member of the cause, though I spend most of my time hunting. For the good of the village, you understand. The soil is poor here, so the people sup mostly on meat and blood. The hides, meanwhile, they make into leather and then into gill. ये क्या देख रहा है? मेरे हिसाब से किसी के आने का इंतजार कर रहा है. कोई नहीं आने वाला है. ये गेम डेव्स ने कुछ नहीं बनाया तेरे लिए. Children of the hunters, now tillers of the land, reap her promised blessing and give praise her gracious hand. Farmers must have settled here in Tabor. I should speak to the old scholar before I forget everything I've read. मैंने तो कुछ याद नहीं रखा करा हुआ है. Hopefully हमें नहीं बोलना होगा इसे. याद रख के. The engravings were in good repair considering their age. Oh, what that I could have seen for myself. Come, don't tease me now. What did you learn of this place and its people? Let's start with the engraving to the south, shall we? What did it say? Guardians of the Republic. Well, shit. The Great Good Mughal Guardians नहीं है. Republic है ये. Crystal ही था शायद. Guardians of the Crystal, the first stones of Tabor, sacred hold thy noble blood, till ends the mother's labor. I'm pretty sure that was it. Fascinating. It would seem the founders of this city were descendants of those fallen charged with protecting the mother crystals. But whatever could have driven the Guardians so far from their sacred charges, I wonder? The engraving to the north is next, I think. मुझे याद नहीं. ये Wanderers of the Golden Plains. ये याद है क्योंकि पढ़ने के बाद इसने Golden Plains कुछ बोला था.
Wanderers of the Golden Plains, lay your roots in stone. With pride recall thy noble past, and make these rocks a home. Or, I think that was it, at least. No doubt you're right. There are vestiges of nomadic customs in Tabor its guardian roots could never account for. This is proving most enlightening. Now, for the final stone. And now tillers of the land, yes. Children of the hunters, now tillers of the land. Reap her promised blessing, and give praise her gracious hand. That's all three. And so, we add primitive farmers to Tabor's founding peoples, the final piece of the puzzle. 3 engravings, one for each of the 3 peoples to have settled Tabor in ancient times. Guardians of the Mother Crystal, wanderers from across the plains, and last, but certainly not least, hunters turned farmers. Little wonder it was so difficult to trace the roots of Tabor's culture. Those roots reach down through 3 distinct traditions. Nonetheless, one cannot help but wonder why this fact is not better known among scholars, given that the stones stand here for all to see. Too many stairs, perhaps. Ha! Too many by far. Here, and thank you. पहले वाले के अलावा बाकी 2 मैं श्योर हूँ मैंने सही बोले थे. पहले वाला मैं श्योर नहीं होता. For years, I have pondered the mysteries of Tabor's founding. Would that I had made the journey as a younger man, when stairs held none of their terror. I mean, इतना बड़ा भी नहीं है. कोई भी आके अप्रेंटिस ले लो जैसे. अप्रेंटिस के साथ आता तो हो जाता. Soft as phoenix down, but tough as boiled bow. तो जा सकता हूँ क्या? कुछ है क्या जाने के लिए? ना. चलो. ओह शिट, इसके लिए पूरा मुझे जाना होगा. Beneath the flood, yes, and not a stone's throw away. Oh dear, I hope it doesn't spread. मुझे पूरा उधर तक जाना होगा वो साइड क्वेस्ट लेने के लिए. उसके बाद 3 और बचे होंगे मेरे हिसाब से. आखिरी वाला जो है क्विंटन का होगा. पहले लिस्ट जो मैं करूँगा. Welcome, travelers. We don't get many visitors here in Tabor. कभी-कभी लाइट रहता है, कभी-कभी अपने आप डार्क हो जाता है. ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्या क्लाउड्स का इफेक्ट करने के लिए करते हैं क्या ऐसे? खेलते हुए उतना ध्यान नहीं जाता उस पर जब ये डायलॉग्स जैसे सुन रहे होते हैं ना तब दिखाई देता है वो. अभी के लिए और कुछ कर नहीं सकता. इस तरफ जाना है. भोगते रहे तो. और तुम भी भोगते रहना. मैं भी तुमसे भी नहीं लड़ने वाला. मैं उसके लिए आया हूँ. कोई मरा यहाँ पे. यहाँ पे नहीं. यहाँ पे मारा नहीं. वेल पर वुंडेड हुआ है. पूरा यहाँ तक आया. ये इसी का खून था. You're injured. What happened here? Where are your comrades? The ether flood up ahead. It swallowed our camp while we slept. Turned every last one of them. There's a village not far from here. Tabor. The people were kind to us. It's only a matter of time before
They won't stand a chance. We can't let those monsters reach the... I'll go. You catch your breath. Thank you. Our encampment is up ahead. Just off the track. They must not reach. Tabor. Forgive me. Lord Kupka. Rest well, soldier. Bad blood. मर गया बेचारा. You said the encampment was close. Let's hope the Akashic is still there. यहाँ पे काफी खून है पर इसके आगे भी जाते रह रहा है. इसको फॉलो करता हूँ यार मैं. ये अच्छा एक इन्होंने रखा है. क्या बोलते हैं ऐसे खून का. ये बंदा भागते रहा उधर से. और ओके मारो. काफी मार दिया मैंने वैसे. और नहीं आकाशिक स्पीड को नहीं मारा मैंने उतना ज़्यादा जितना सोचा था मैंने. अलविदा. ये तो मरा. सही में अलविदा. इसको अपने साथ नहीं ले जाता. हमने क्या 20 भी नहीं हुए शायद. 20 भी नहीं लगा इन्हें मारने के लिए. Someone there! Please, I can't move my leg. That doesn't sound like an Akashic. यहाँ ऊपर रुका हुआ था इसलिए शायद इसका नहीं हुआ. आकाशिक प्लट जो है वो नीचे की तरफ है थोड़ा. यहाँ पे नहीं. You're with the battalion? I am. I heard the fighting. Are the others? Taken care of. One of your brothers in arms told me what happened and asked for help. Another survivor? Where is he? Tell me. His wounds were too deep. He was right to send you. Those things you slew are no longer my brothers. Tabor is safe thanks to you. Here, you've earned it. देखता हूँ कोई और. You seem familiar. Have we met? You must have me confused with someone else. Wait. That scar. Son of a whore. You're Sid. I was there in Kosnis when you killed my brothers. I was there in Rosalith when you killed my commander. My war with Hugo Kupka is over. I bear no ill will toward those who followed him. What of my ill will? Coward! Draw your steel. Lord Kupka shall be avenged! He can barely stand. When your wounds have healed and your head has cooled, come and find me if you must.
Though I hazard your life would be better spent in service of those who need it. Or have you forgotten your oath to the Republic? My oath? What would you know of oaths? I know how hard they are to keep. Which is why I'm giving you the chance to keep yours. No. I won't be deceived. Lord Kupka told us of your crimes. You are an outlaw. A murderer, not some Man. Like you or anyone else. I am nothing like you. But if you're not gonna kill me, then go. Leave! Just know that I will find you, Sid. Someday. कुछ बात बोलेगा मैं? You will regret not killing me when you had a chance, Sid. I will avenge my master. अरे तेरे मास्टर को मार दिया मैंने. तू क्या कर पाएगा? तू एक आइकन भी नहीं है. डोमिनेंट मेरा मतलब. कोई आइकन एबिलिटीज भी नहीं है. ये देख. ये मेरा आइकन एबिलिटीज. 15 सेकंड भी नहीं बचता मेरे खिलाफ. तू तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं मैं. खुश रहे उसके साथ. चलो यहाँ के सारे हो गए ना. Veins thick with precious ore finger through the regions, mountains, and feed this remote village's many forges. Veins thick with precious ore finger through the regions, mountains, and feed this remote village's many forges. Okay. मैं सोच रहा था veins thick with precious ore वो एक सेंटेंस है. Finger through the regions, mountains वो एक सेंटेंस है. And feed this remote village's many forges वो एक सेपरेट सेंटेंस है. चलो नहीं यहाँ पे एक ही है ना. बहुत सही बहुत सही. एक मिनट. ये इलाया या जो भी बंदी का नाम था वो दे दिए क्या फिर से एक और साइड पर? यस. पता बंदी का नाम? We'll need help. Then we'll have to find it, and fast. We cannot let this chance pass us by. उससे बात करता हूँ एक सेकंड में. Consultation 100T, transportation domestic 500T, transportation external 1000. All prices per wagon. Money is upfront. Additional fees for heavy or unstable loads. Consult written. 500T भूल गया यार. T क्या था? 10,000 गिल को जो कुछ भी बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा अभी क्या बोलते हैं उसे. चलो देखते हैं ये क्या चांस की बात कर रहे हैं. क्या मौका है अभी इनके पास. Clive, your timing is impeccable. It just so happens that right at this very moment, we're in need of someone with your talents. And what talents would those be? Why, your fearlessness and your skill with a blade. I'm listening. Well, as I'm sure you're aware, when these dark skies swept over the Republic, so too did a wave of chaos and confusion. Randalar has been particularly badly affected. Many of the capital's bearers have lost their masters, or taken the opportunity to flee them. None remain free for long, of course. Most find themselves under the protection of the Fist before they get far. But the army too is in disarray, and finds itself unable to provide for its new charges. Which means it has been looking to sell. And you've been looking to buy, to make sure these masterless bearers remain that way. Precisely. It's the perfect opportunity to free dozens more, and for an attractive price, no less. So where does my skill with a blade come in? Though we may have the funds to buy these bearers, we have nowhere to house them. So we've been searching for a place where they can be resettled. Somewhere far from the prying eyes of those who would see them enslaved once more. And we believe we have found one. Cashlock. A small hamlet hidden in a canyon. The place was abandoned a long time ago, but when the men moved out, the beasts moved in. And so we seek the aid of a fearless swordsman to
Encourage them to look elsewhere. You'll help, won't you? How could I refuse? Excellent. Theo, if you wouldn't mind making arrangements for the transportation of our guests, as we discussed. Of course. Leave everything with me. Sounds like you'll have your work cut out for you. I will. We have an entire village to stock and furnish. Residents and all. Even if I begin right now, I'll be working day and night. So I'd better get started. Try to clear the place out before the wagons roll in, won't you? I'll do my best. You will find a village in Chedra's Thread, past Lateney's Cleft. My man there will open the gate for you. All right. Wish me luck. I'm sure you won't need it. ट्रेडिंग प्लेसेस मुझे मालूम है ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ कहाँ गया यहाँ पे जानता था ये यहाँ ऊपर से मैंने वो जो भी अबैंडन विलेज है उसको देखा था और 20 भी दिख रहे थे उधर वुल्फ वाले Pass through Lateney's Cleft and you'll see what's left of Cashlock down in the valley. और ये ज़्यादा अच्छा है वहाँ से ही नीचे जाने का है पास से ही एम्ब्रोसिया चलो Be safe. Oh, you're a friend of the Crimson Caravans. And by the look of you, I'd say you were the help they told me was on its way. Yes. Cashlock's just down there, if you'd be so kind. जा रहा हूँ टेंशन मत ले ड्राइव आ गया यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा अलविदा यहाँ से नीचे कूद सकता हूँ क्या सीधा Yes. This must have been a nice place once. And it will be again. और अरे ये सब आ जाओ ना यहाँ पे सही में आ जाओ सब के सब यहाँ पे अटक जाओ सही है यार ओह शिट एक के साथ ही कर लूंगा यार दो और वैसे आ रहे हैं वो अकेले लड़ रहा हूँ उनसे जा ओह नहीं 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 इसको नीचे करो ओह नाइस है आ जा यहाँ पे अरे नहीं आ रहा ये खत्म करने के बाद आया क्या फील करते हैं कोई एक बड़ा आने वाला है ओह कोई बड़ा वाला नहीं है मुझे लगा था इसको मारने के बाद एक बड़ा वाला आएगा
That's all of them. Come on, Toggle. Let's head back to Boklad. ये थोड़ा आगे जाता हूँ मैं, देखना चाहता हूँ क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे आगे जाऊँगा तो। ये रास्ता तो कुछ दिखा रहा है ये। This is no time to ride. तो कौन सा टाइम है राइड करने का? ये है ना फाइनली। Come on. मुझे लग रहा है यहाँ पे एक हंट बोर्ड का कोई होगा। यप, डेफिनेटली हंट बोर्ड के लिए ये कोई एस क्लास शायद। वेल 2 एस क्लास हैं, एक बी और एक ए क्लास है अगर मैं गलत नहीं होता हंट बोर्ड में। Something the matter, Theodore? Quiet. Those are our terms. I trust that you will give them your full consideration. I shall. Thank you. Him again. Someone you know? Yes. And, no. But enough about him. How did you fare down in Cashlock? It's done. The village is safe now. You made quick work of it, as always. I should go and let Eloise know. Keep you. But Clive, don't tell her I was watching her, will you? She'll only get upset. I'll explain everything once you've finished with your report. All right. We'll speak then. Eloise, I just got back from Cashlock. The village should be safe now. Thank you, Clive. Here, something for your trouble. Well then, now that you have laid the groundwork for our little project, I suppose we'd better finish the job. The first thing we'll need to do is make sure our offer for the bearers is accepted. You're still in negotiations? We are. A trusted colleague has been dealing with the Fist on our behalf, but things have been trickier than we anticipated. I suppose it's to be expected. This is the army we're dealing with. Fighting's what they do. But we shall emerge victorious in the end. Well, if you need any help, you know where to find me. I'm not sure I do. But thank you, all the same. Okay, वो मुझे लगता है वो जो बंदा था ना जो एलाइस के साथ बात कर रहा था वो इसके नेक्स्ट भाग के क्वेस्ट में मालूम पड़ेगा उसके बारे में। जैसे क्विंटन का है और वो ब्लैक स्मिथ का था पार्ट 2। ओ नहीं, अभी मालूम पड़ेगा। Clive. You wanted to talk? The man I was watching earlier, the one speaking to my sister, he represents the Silver Peak Consortium. It's one of the bigger trading houses. I don't think I've heard of them. Well, every trader in Dharmekia has. They operate across the length and breadth of the Republic, and they're still expanding. They've been trying to get Eloise to join their ranks for some time now, and judging by her reaction earlier, I'd say she had half a mind to accept their latest offer. And you'd rather she didn't? I would rather she did what makes her happy. And I would never deny her such an opportunity. Eloise saved me from slavery, and we have striven to save others like me ever since. But this was not the life my sister wanted, nor the one she deserves. I won't let her give up on her dreams again for my sake. She freed me from my bonds, and she must be freed from hers in turn. You're a good man, Theo. I have always been grateful for what my sister did for me, and I want to repay the favor by letting her live her own life. But each time an opportunity to do just that arises, she turns it down. For my sake. She loves you. And I love her.
Which is why I want this time to be different. To show her that I don't need to be watched over anymore. Though I'm sure I'll still need some help from time to time. I trust that I can count on you. Always. Thank you, Clive. Well then, I had better get back to work. These bearers aren't going to move themselves. That's a job for the Crimson Caravans. This could well be the last commission the Crimson Caravans undertakes. Under present management, at least. But don't tell my sister I said that, will you? हर चीज़ का don't tell my sister बोलते जा रहा है. Who needs a porter when there's nowhere left to go? If you're thinking about leaving for the Crystalline Dominion, you're out of luck. They've closed the checkpoint, even for those of us with traders' passes. Not that I'd recommend heading that way. People are saying they've seen smoke rising over Twinside, and infernal beasts roaming the Crystal Road. ये कुछ नया बोलेगी? It's only a matter of time before the army agree to our terms. You'll see. Well, thanks for clearing out Cashlock. Now the rebuilding begins. But don't worry, you can leave that to us. मालूम है. मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अब. कोई और नहीं है ना? साइड क्वेस्ट सिर्फ एक ही बचा है. यस. क्विंटन का. ग्रेट हाई जस्टिस जो भी उसका नाम था. उसके खिलाफ लड़ाई होगी. Taking you all to a storehouse in the Bales. Leave anything you don't need behind. पूरा खाली खाली. एक मिनट, मैंने इस्तेमाल किया था क्या कुछ? देख लेता हूँ, अगर पोशन इस्तेमाल किया तो खरीद लेता हूँ. You haven't much, but you're free to look. Yep, ये एक पोशन इस्तेमाल किया था. You know what you have to do. I won't let you down. I won't let you down. कैसा बोला? Clive, I fear that I must bid you farewell. As you know, our time grows short. The Lord Chief Justice's vultures are circling. We must strike now. Before we part, I want you to know that, though I may not always have been your most vocal ally, I trust you, as I trusted your predecessor. Thank you. I appreciate the sentiment, and I understand more than anyone how you feel. But is revenge really the answer? It is the one I found, and it is all that I have lived for since that day. But what of Lostwing? Everything you've built. I built Lostwing to achieve this aim. Once it is done, the village will have served its purpose. My comrades and I are sure of our cause, and we shall fight to the last, come what may. But there are those among us who cannot fight. Children, the elderly, bearers afflicted by the curse. I would place Lostwing in their hands, if I thought it would do them any good. But a village home only to the frail and the infirm is not likely to stay a safe haven for long. And so, Clive, I find myself turning to you once more. Will you take them to your hideaway, that they might live even should Lostwing die? I will. Thank you. I will not have it said that I did not see to the well-being of those who rallied to my cause. The people I speak of have withdrawn to Gotan's Bales, away from danger in case the Black Shields strike. Understood. I'll make sure they get to the hideaway safely. Then the last of my preparations are complete. Fare you well, Clive. And may Griga guide us. All of us. But great justice, the second. Those who cannot join us in the coming fight are gathered at Gotan's Bales. I would ask that you see them to safety. I'll search the village one last time for any stragglers. Then join Master Quinton and get some justice.
क्या आवाज है इसकी? To go down to Hales then, and quickly, before anyone else finds them. मैं थोड़ा यहाँ पे रोल प्ले कर रहा हूँ, करने दो. And get some justice. गले में इतनी खराश हो रही है यार वो से बात करने के चक्कर में. इसलिए मेरे हिसाब से उस बंदे के उतने लाइंस भी नहीं है. कोई क्या बोलते हैं वॉइस एक्टर भी नहीं करना चाहेगा. गले में बहुत जोर पड़ रहा था उससे. कहाँ पे आ गए हम, यहाँ से कहाँ जाएंगे हम. मेरे हिसाब से ये भी लड़ना चाहेंगे उसके साथ, क्विंटन के साथ. यहाँ पे ऐसे रहना नहीं चाहेंगे, पर ये कुछ कर भी नहीं सकते मेरे हिसाब से. चलो देखते हैं क्या फैसला लिया इन्होंने. Everyone, Quinton has asked that you come with me. He can no longer guarantee your protection, but I can. There's a safe place I can take you to. If that's what the Master thinks best. Sid, none of us would be standing here today if it weren't for Master Quinton. We owe him our lives. So we ain't about to start telling him what he should do with his. If he's saying we ain't safe in Lost Wing no more, it's 'cause he ain't coming back. And if that's what has to happen, then so be it. I only hope he can see this through to the end. That we get to see justice done. I hope so too. Oi! You lot! Where's everyone else? They ain't already left, have they? They've gone with Master Quinton. Fuck! 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 What's wrong? I've just come from the Justice's manor. We have to get Quinton to call off the attack. It ain't just the Black Shields protecting the place. He's got a guard dog and all. A fucking monster. They don't stand a chance against that thing. If I don't get the message to them, they're all gonna fucking die. No. We can't let this happen. Sid! Don't worry about us. You've got to catch up with him. We can't let Quinton die before that bastard does. All right. I'll do what I can. Where is this manor? It's way over to the east, through the woods. Heaven Hall, he calls it. Promise us, Sid. Promise us you'll do what you can. The manor's to the east, through the woods. Quinton and the others will be halfway there already. You have to hurry. Please, Sid, you've got to catch up with him. Don't let all our work be in vain. I still haven't paid Quinton back for saving my life. So don't let him die. Not yet. Okay. पास में कोई है? ये है ना पास में. ठीक है. हेवन हॉल. ओह ये वो ही है जहाँ पे मैं किससे लड़ा था? एक हंट बोर्ड था उधर. एक कोरियल है उधर. हॉल. ये पहले नहीं हुआ करता था यहाँ पे. चौकोबो के साथ जाते हैं. ज़्यादा तेज हो गई है. अरे ना 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 तुझसे नहीं लड़ना चाहता मैं. समय बर्बादी है और कुछ नहीं. मुझे सीधे जाके हेवन हॉल जाना है. कौन से बाउंटी से लड़ा था यार मैं उधर? याद नहीं आ रहा. हंट. वेल बाउंटी नहीं, हंट बोर्ड है इसमें, बाउंटी बोर्ड नहीं. ना किसी से तो लड़ा था मुझे याद है. किससे लड़ा था एग्जैक्टली याद नहीं. शिट. गलत 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 गलत. यहाँ बीच में एक टर्न है कहीं पे. ये रहा ना. ये क्विंटन के चौकोबो होंगे मेरे हिसाब से. यहाँ पे शायद वो फॉलन वाले उससे
Don't tell me I'm too late. एक मिनट, वो देखने से पहले बस यहाँ पे देखना चाहता हूँ। ओह, यहाँ वो उससे लड़े थे, वो बड़े से फायरबॉल के खिलाफ। You deserve a rest. हंट के लिए भी नहीं था ये शायद, ये वो प्लस वाले साइड को इसके लिए था जिससे हमारे ये पोशंस वो सब का बड़ा इन्वेंटरी साइज वो सब बड़ा, उसके लिए गया था मैं उधर। Quentin, are you all right? No. But I am alive. Which is more than I can say for my comrades. They followed me without question all the way here. And they died. For nothing. This must be the guard dog. Quentin. I'll hold it off. You go. But... Your comrades didn't die for nothing. They died for you. Don't let their sacrifice be in vain. I won't. Come on, then. You're no guard dog. You're just a rabid beast that needs to be put down. Oh, shit. ना To me, boy. इतना आसानी से नहीं मारने दूंगा। ओ, नीचे 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 गिर जा। जा। इसका होते ही मैं ये इग्निशन शुरू करूँगा, उसके बाद फ्लेम्स ऑफ रिबर्थ। फिर से यार थोड़ा और हो जाता हूँ, 50,000 तक पहुँच जाता मैं। ओह यार, जा। हमला करेगा कि नहीं, या फिर ऐसे करेगा? मैं वही देख रहा था, वो मुझे मारना पड़ेगा या फिर वो उससे ही मर जाएगा। जीगा मेगा प्लेयर या जो भी इसका नाम है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ पर मुझे खुद याद नहीं आ रहा क्या है इसका नाम। सरप्राइजिंगली दिस ये ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। If only we'd arrived earlier. Is it over? It is. He wept and begged for mercy. And I cut him from ear to ear, just as I dreamed of doing all these years. All my plans, building a haven in Lostwing, freeing bearers from their chains and recruiting them to my cause. It was all for this. But what is this? Justice? My faithful comrades. All those lives lost, so that I might take another. Quentin. Master Quentin! Oh, thank Grieger you're safe. You're alive. And so are you. I'm so sorry. I tried to warn you about that thing. And I hate to say it, but
There's more bad news. It's Lost Wing. It's been flooded. What? Lost Wing. My Lost Wing. And look who's here. They must have stolen in after we left, just before the flood struck. What if there are still people in there? Don't be a fool! Damn it. Quentin's not going to last long in there. Come on, Torgal. We need to make this quick. Oh, 3 थे मुझे लगा सिर्फ 2 ही थे Oh, ना 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 तुम सब के सब यहाँ पर ही रुको Oh shit, गलत बटन और कौन है? आकाशिक ब्लैक शील्ड्स यहाँ पे हाँ Quentin! Hold on. We're gonna get you out of here. और नहीं Nice try. इतना आसानी से नहीं मालूम होगा It's over. सही में चलो तुम सब यहाँ पर ही उठ पाओ सब के सब तू भी हटा सही है यार वो 2 हमले जब बहुत ज़्यादा हो तभी सिंगल बॉस के खिलाफ वो ब्रेथ वाला उतना अच्छा नहीं लगता मुझे पर जब इतने ज़्यादा एक साथ हो तो मस्त है वो इग्निशन की तरह I need to get back to Quentin. Oh shit. Quentin. Quentin! Thank the Founder. He hasn't turned. Welcome back to the land of the living. Is Lost Wing? The flood has filled the valley. I see. Then all is at an end. A strange way to achieve one's life's ambition. No, Master Quentin. Save your strength. Why? All that I strove for is gone. Only emptiness remains. I have nothing left to live for. What the heck are you on about? You've got us, ain't you? Don't try telling me you only freed us so you could get revenge. We're more than that to you, and we all know it. I thought you weren't coming back. But I prayed, and you did.
There's got to be a reason for that, right? Can't we just go back to how it was? You know, you looking after us all. Your work ain't over yet, Master Quinton. We believed that you were the right man to lead us, and we still do. Your village may be lost, but it seems your people aren't, so long as you remain to guide them. But why? After what why would anyone follow me? 'Cause we're family, aren't we? Family? Yeah, and all our comrades who went with you, they felt the same. Lostwing weren't just a village. It was all of us. It was. And as long as we're still here, it is too. We can start again. Build a new Lostwing, right here in the Bales. A fresh start. One life ends, and another begins. Why just a village? We could build towns. A nation, even. What's to stop us? That's the Master Quinton we know. Please. I am nobody's master. Quinton will suffice. After all, we are family. Permit me to withdraw my request. I will no longer be needing your help in looking after my people. I'll pretend you never asked. But you must be rewarded for your efforts on our behalf. You saved my life twice over. And more besides. A bottle or two of your finest red will suffice. Of course. Nothing but the best. And I have a feeling that this year's vintage will be the finest yet. If you don't mind waiting, that is. I look forward to it. The Hanged Man signboard. The emblem of the Hanged Man, the tavern at the heart of Lostwing. The village is a haven for the downtrodden, built around a fallen ruin. One as apt to reveal its secret as the Hanged Man's enigmatic tavern keeper. टाइप चाहिए मैं सही है विकेट व्हील हाँ इस्तेमाल नहीं करता हूँ They are right, you know. Lostwing can be rebuilt. It was more than a mere village. More than a staging ground for revenge. It was a vision of how life might be. Of how we who have suffered can come to find family again. I'd have followed Quinton to that manor if I could have done, and I'll keep following him now. Wherever that surly bastard cares to lead us. We may be bruised, we may be battered, but we won't stop fighting. Master Quinton needs us now more than ever. Quinton's gonna build us new Lostwing, and I'm gonna help. बहुत अच्छे तू शायद फ्यूचर मेयर बन जाएगा लॉस्टविंग का वेल न्यू लॉस्टविंग सही नाम है न्यू लॉस्टविंग रब हंट बोर्ड चलो देख पहले बी और ए वाले करते हैं How are we supposed to do our duty when the hills are crawling with a cat? फिर से नया आ गया शिट I for am shocked I tell you that certain members of your very own species have earned themselves a place in this rogues gallery, Kupo. But evil is as evil does, and it is every hero's duty to vanquish it, no matter how close to home it might appear, Kupo. Did you see that all the billets are marked with a location, Kupo? That's where the horrible horror in question was seen. But you can't be expected to memorize every last place name in the whole wide realm. You're only human, Kupo. So if the place name doesn't tingle your pom-pom, Kupo, try reading the witness's statement.
Sometimes there are other details in them that might help you track the nasties down and finish them off. हाँ, वो काफी इस्तेमाल किया. How goes the hunt, Kupo? As if these boggles weren't bad enough on their own, I hear that some of them like to invite friends to the party. But never fear, Kupo. I, Nectar the Bold, shall always be with you, in spirit. If you need more practical assistance, Kupo, then turn to Torgol. सारे पढ़ लिया अब. कोई नए आए हैं apparently. Oh yes. B rank, A rank, C rank, AS, B और A. Oh. 3 अलग अलग. Shit, ये परेशान कर सकते हैं. अब मैं क्या देखता हूँ. दाल में क्या, ये एक है C, एक A और एक B, ABC. तो C वाले हैं South of Tabor, Dalmikia. A team of coast breakers traveling through Tabor to the fields of Korava were met by a group of hunters from the village, who warned them not to stray too far from the main road, for in a gully not far hence rested a pack of wolves that even such practiced hunters as they would not dare to wake. Despite the fine luster of the animals' pelts, too many of their friends had succumbed to temptation, only to be torn limb from limb. ठीक है, टैबर से लेके फील्ड्स ऑफ कोर्डोवा के कोई एक गली में है. The hunters of Tabor speak of a wild chocobo that haunts not only the nearby Badlands but also their dreams, for it exhibits a ferocity rarely seen in species and has ripped more than a dozen of their comrades from gizzard to groin and feasted on their flesh. The bird is far past taming. It will needs be put down. The sickle में ना. ठीक है, ये भी Tabor ही है फिर से. हमारे डायल में क्या? Merchants who play their trade across the fields of Korova tell of an outlaw 5 and 20 hands high and mighty of few who preys upon unescorted travelers. They claim he lives alone in one of the many abandoned villages that litter the region. But none has been brave nor foolish enough to narrow the search any further. If you who read this have either or both of those qualities, the Dalmatians beg for your aid. ये फिर से एक abandoned village में ढूंढना होगा, और इसके लिए पता नहीं कहाँ ढूंढना होगा. Badlands में, ठीक है. दाल में क्या अभी करता हूँ पहले, और वो करने से पहले थोड़ा और ले लेता हूँ ये. How may I help you today, Clive? Is everything we've received and everything promised? No risk, no reward. Orchestrion role. Since I can remember, I have served none but myself. Turned my back on the world for a handful of skills and a heavy purse. But where has that left me? It is hard to keep joy in one's heart when all those around you are without. Something must change, and that change must start with me, a lonely porter. Amber, पता नहीं Amber इसका क्या होगा. Talisman of Prime. Ooh, ये exotic है. Come again. I may have more for you. Okay. Tabor किधर है? मुझे याद नहीं टैबर कहाँ है, सही बोलूँ तो. Lost Wing, not reached, Dragon's Array, Port Isolde, Hawk's Cry, 3 Reeds, Martha's Rest, Eastpool, The Din. टैबर कहाँ है? टैबर 2 कहाँ है? फील्ड्स ऑफ कोरोवा में. और बैडलैंड्स कहाँ पर है? बैडलैंड्स का भी बता रहा नहीं है. सिकल में पर बताया है ना उसका, वो A रैंक वाले का. तो कंफर्म कर देता हूँ, सारे इधर ही हैं कहीं पे. सिकल में ही था ना वो चॉकोबो. हाँ सिकल में, ठीक है. सिकल में उसका ध्यान रखूंगा मैं. पर अभी के लिए यहाँ पे है वो एक वाला, यहाँ पे गली में वो वुल्फ वाले थे. फील्ड्स ऑफ कोरोवा के किसी एक अबैंडन विलेज में वो C वाला है.
वो एक बंदा जो सबको मार रहा है, और ए रैंक वाला जो है वो द सिकल में है। ठीक है, सारे के लोकेशंस मिल गए मुझे, बस जाके करना। Lord Rossfield. ये ऑलरेडी सुन चुका हूँ, कुछ नया डायलॉग नहीं है इसका। यहाँ पे से बाएं की तरफ मुड़ना आगे से, यहाँ पे मुझे मिलेंगे। हाँ वही है मेरे हिसाब से, 1 2 3 4 5। The pack, rank C. Oh shit! इनमें से किसी को भी मैं नहीं कर सकता। Shit! Oh fuck! Oh my god! Shit! सही में इनसे भी इनको कुछ नहीं हो रहा। Oh, heal. एक स्टोन टॉनिक लेना ही होगा। इसको थोड़ा नहीं इतना आसानी से यार, ये थोड़ा नाइस नाइस। लगभग मर गया है ये। ना 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 बहुत अच्छा। मर जा यार। क्या अलविदा और मारो। मर जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। यस, नोटोरियस मार्क स्लेइंग। ये सीक्रेट थे वैसे। Shouldn't have messed with the leader of the pack, eh, boy? 3 desert roses। यहाँ पे मेरे हिसाब से एक संदूक होगा मेरे। कुछ तो हो यहाँ पे, नहीं कुछ भी नहीं है मेरे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये हंट के लिए आना था, कोई लूट के लिए नहीं। ये कुछ 3 रोजेस या कुछ मिला था। स्टोन स्किन, 5 पोशन, 4 हाई पोशन, काफ़ी है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट बी ग्रेड वाले के लिए जाऊंगा मैं। उसके लिए मुझे वो ढूंढना होगा अबैंडन विलेज में, किसी एक अबैंडन विलेज में मिलेगा वो। छोड़ो यार, ये इसके एम्ब्रोशिया के साथ ही जाता हूँ उधर। मैं सोच रहा था फास्ट ट्रैवल कर तो उधर ड्रस्ट हाउस या जो भी है वो ऑब्लिक्स का नाम। इनसे नहीं लड़ने वाला मैं। नो 2 सेकेंड बस इसके उनके पास जाने के लिए। और अब यहाँ पे अबैंडन विलेज पे ढूंढना होगा, अबैंडन विलेज के आसपास। एक तो वो रहा
और मुझे नहीं लगता उसमें होगा, पर फिर भी देख लेता हूँ। कोई है क्या उधर? वो है क्या वो तीन भाई लोग? नहीं, इस अबैंडन विलेज में नहीं है। एराकोल जिसे मैंने मारा था, ये वाला है। ओ नहीं, तुझसे भी लड़ने नहीं आ रहा हूँ, तो मुझ पे भी हमला मत कर। यहाँ पे शायद होगा वो। शायद यस, वो रहा। रैंक बी। The 10 of clubs. Not the gods forsaken soul, eh? Only those who have nothing are welcome here. So empty your pockets. नहीं, इतना आसानी से नहीं मारने होगा। हो गया। मुझे लगा था मैं उसके रेंज के बाहर हूँ। कौन से चला? ओह, ये गया और अब मारो। ना ना ना, इतना आसानी से नहीं मारने होगा। नीचे आ और फिर तुझे पूरी तरह सैगर करूंगा मैं। शिट। फिर सही में काफी ज्यादा लग गया। या और अब ये हो गया। ये फ्लेम्स ऑफ रिवर्स करूंगा मैं जैसे ही मौका मिला। मुझे लेवल अप करने के है एक बड़े स्किल को। यस, 50,000 के ऊपर फाइनली। मैंने पहले भी किया है, मुझे लग रहा है 50,000 से ज़्यादा नहीं। फिर से मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। पहले 3 हमले से 2 बार नहीं बच पाया हूँ मैं। ओह, इतना आसानी से। Please come from. Nah. Damage कर इसे। Oh, इस बार कैसे नहीं हुआ मैं? चलो इस बार पहले के अटैक से बच गया, पर सारे उससे नहीं बच पाया। सारे अटैक से नहीं बच पाया।
प्लीज ये हो जा। और शिट, थोड़ा और समय होता था जितना हो जाता। मर गया। नोटोरियस मार्क स्लेन। काला टाइट। A deserter turned outlaw. We were more similar than he knew. मालूम है क्या? गेर और आई को एबिलिटीज का है। इस वाले को लेवल अप करूं। ये डैमेज ये सबसे ज़्यादा करता है ना। 3000। ओ अभी नहीं कर सकता मैं। 3200 चाहिए इसके लिए। ऑलमोस्ट भी 3100 चाहिए। ये ज़्यादा स्टन के लिए है। ये मास्टर करने के लिए 4250। वाह भी वाह। इसके बारे में भूल ही गया हूँ। ये अपग्रेड करने से 3 हो जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ 3 बार से आ गया अब। और एक और बार करूँगा तो फिर 4 बार। वो मैं फुली अपग्रेड कर रहा हूँ। अरे यार पास में कोई है नहीं। मैं सही बोलूँ तो अभी पोशन स्टोन स्किन वो सब फुल करना चाहता हूँ ए ग्रेड के खिलाफ लड़ने से पहले। यहाँ पर ही जाना होगा मुझे, वो फुल करना है। उसके बिना मैं नहीं जाना चाहता ए ग्रेड से लड़ने के लिए। Here, take a look at my wares. Of course. Anything else? और अब सिकल में जाके उसको ढूंढना है। एक चौकोबो मैं सवारी कर रहा हूँ दूसरे चौकोबो को मारने के लिए, पहले उसे ढूंढने के लिए। इस चौकोबो के साथ उस चौकोबो को ढूंढूंगा, पर इस चौकोबो के साथ उस चौकोबो को मार नहीं सकता मैं। अभी के लिए तो सिकल में जाके उसे ढूंढना है और उसके बाद एक एस ग्रेड वाले से लड़ना है। एक को तो मैं मारना चाहता हूँ कम से कम। जो पहले एस ग्रेड मिला था ना उसको ढूंढूंगा मैं। इस पुल के आसपास है, मुझे मालूम है शायद कहाँ पे मिलेगा वो। बल्कि इस सिकल में पहुंच गया हूँ और ये रहा। इस सही में मुझ पे हमला करेंगे यहाँ पे। ओके भाग गए। ओके चलो इससे लड़ते हैं। ड्रेड कॉमेट ये रहा। That's like no chocobo I've ever seen. Something tells me it won't be easily broken. Oh shit! Too slow. Oh boy, there's a donut. काफी पास आता है यार। जा Too slow. Nice try. Heal. To me, boy. Oh shit. Too slow. Heal. इसका कोई स्टन का नहीं है। Nice try.
Oh, fuck. क्या? हो गया. Shield. इतना आसानी से नहीं. माल में क्या आगा, इसका कोई स्टन का नहीं है, तो ऐसे ही मारो इसको. मारते रहो. इससे इसको लग. ओह शिट. इतना आसानी से नहीं करने दूंगा. ओके. वो हमला करने दिया था. ओह शिट. 3. ओके. ये उम्मीद नहीं कर रहा था. Good. हाँ. ये भी बात. Good. Oh. 4 बार किया इस बार. मारो यार. सही में कितने? Fuck. Shit. I needed that. Shit. सही में यार, ये एक के बाद एक वीडियो कर रहा था. माफ करना श्री भाई, ये थोड़ा ए ग्रेड वाले उससे लड़ा था तो देखा नहीं. स्ट्रीम में स्वागत है श्री भाई. मैं एकदम सही हूँ. आप कैसे हो? ये वीकेंड कैसे गया? उफ, मार दिया इसको. संडे खत्म होने वाला है. वीकेंड में क्या किया आपने श्री भाई? एक और लेवल और 40 का हो जाऊंगा मैं. Comment feather. A truly red chocobo. As truly red chocobos are rare, one might assume the same could be said of their feathers. Yet somehow they are found in nearly every market from Dalmil to Northreach. Contrary to what the merchants hawking them would have you believe, however, the items on sale are more often than not feathers of robin or even common hens. इससे कोई एक अच्छा सा मैं बना पाऊंगा हथियार. Poor beast. There was nothing I could do. सही है. सोना भी सही है. मैं यूजुअली सुबह सोता नहीं हूँ क्योंकि फिर रात को नींद नहीं आती है मुझे अगर मैं सुबह सोऊं, और फिर रात को नहीं सोऊंगा तो फिर अगले दिन सुबह नींद आते रहेगी, जिसकी वजह से मुझे सुबह सोना होगा और फिर वो साइकिल रिपीट होते जाएगा. इसलिए मैं यूजुअली सुबह सोता नहीं हूँ.
एस क्लास ले जाते, पर उससे पहले सब कुछ फिर से फुल करना है. Let me tell you a story, Clive. ये क्या हो गया? Right. Them rumours Wetlegs were spreading. Might be they weren't just tales plucked out of thin air. You see, there were a time when I weren't too particular about who I sold steel to, so long as they paid me the right price. Some women lust after blood, others after flesh, but me, I were always one for gold. वैसे श्री भाई आजकल कौन सा गेम खेल रहे हो? To satisfy that lust, I sold to opposing armies, stabbed my every client in the back, made myself the most hated woman in the twins. But then one day I met a man who made me a different kind of offer. Said he'd give me access to a realm-wide community of like-minded individuals in constant need of steel and sundries. On the condition I sold to him and his alone. Was that the first time you met Sid? Aye. And I fell right into his damn trap. He was true to his word, so I ended up being true to mine. And I soon started making the best profits I've seen since taking up the trade. And all without aiding or abetting any outlaws. Except Sid himself, that is. Told me about his plan to topple the mother crystals, you know. Said that with them gone, the realm would want for all manner of things. An opportunity for the likes of me to mint gil. Why, I reckon an enterprising individual could find himself the richest dam in the twins. And that's when he had me. I emptied my stores that day and moved into the hideaway proper. And the rest, as they say, is ancient bloody history. A dozen years on, and I'm still not the richest dam. Not for lack of trying, mind. But I can say that I have never been happier. You've all shown me there are some things more precious than gil. That there are. So don't you go messing it all up, or you'll have me to answer to. Yes. Aye, it's a dangerous world out there. Oh, good. Best of that great lump. Why, he's gentlest, most beautiful soul I've ever had the pleasure to meet. He might not be the brightest crystal in the crate, but he's got a good heart, and I would far rather have an honest fool working for me than a clever scoundrel. He never shirks his duties, never answers back, never dips his fingers in the coffers. No. I won't hear a bad word said about him, though I might say a few myself. The lad's even got Blackthorn teaching him the secrets of smithing now. So I'm keeping my one good eye on the forge. If that blowhard of a blacksmith should even think about doing goats down, we'll be having words. Coin purse weighing you down. पूरा का पूरा इस्तेमाल हो गया. You'll not find a better price than that. Come again. Oh, वाह भाई वाह. I'm not much bothered either way. चलो एस क्लास देखता हूँ. पहले एक को लड़ूंगा. उससे याद आया, मुझे थोड़े बहुत लोगों को मारा है. मैं एक अच्छा सा हथियार बना सकता हूँ क्या अब? What do you want? मैं अच्छा सा बनाना भी चाहूँगा क्या अभी? ना, मेरे पास जो है वो एकदम सही है. कौन सा सोड है मेरे पास अभी? ये वाला ना 295. I mean, ये भी क्यों बनाऊंगा बेकार में? 295 वाले एकदम सही है. If it's knowledge you seek. चलो एस क्लास वाले का ढूंढता हूँ. पहले वाला एस क्लास जो था वो तो ईस्ट पूल के पास है, मुझे याद है. दूसरा वाला पता नहीं. How are we supposed to do our duty when the hills are crawling with a cat? चलो ईस्ट पूल का है ना एक. The Rosarian runes we have lately been investigating. Express permission, the breaker of worlds. Rosarian runes, na.
Ruin Reawakened, The Breaker of Worlds. क्या नाम है यार ये इस क्लास वालों के. Sanbreque legend tells of a dread dragon who set near half the realm alight with his torrid bread before being sealed away behind a magical mist by Gregor herself, some sources claim. Though it has long been forgotten which parts of the tale are true and which are mere myth, recent reports of a great dragon's roar reverberating around the woodland passes of the empire are real enough. Sanbreque legend. Sanbreque पता नहीं कहाँ है. Rosarian ruins. मेरे हिसाब से तो ईस्टपुल की ही बात हो रही है. 3 है apparently इधर. चलो जहाँ पे मैं सोच रहा हूँ उधर ही है कि नहीं देखते हैं. मेरे हिसाब से तो यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ मैं, क्योंकि विलेज और रोजारियन रून्स की जो बात कर रहे हैं उससे तो यही आता है दिमाग में. हाई पोशन यूज्ड. हेल्थ तो फुल ही थी वैसे भी. ओह पोशन भी था, सिर्फ हाई पोशन नहीं. प्लीज़ यहाँ पर ही हो, प्लीज़ यहाँ पर ही हो. देखे तो नोप, यहाँ पे नहीं है. शिट, रोजारियन रून्स कहाँ पे होगा यार? विलेज की बात हो रही थी कोई. ट्रांस रोजारियन ये तो नहीं है कहीं? द विस्परिंग वाटर्स में वहाँ पे ट्रांस रोजारियन एक्वाडक्ट भी है क्योंकि. Let's go. चलो देखता हूँ. मगर वो भी नहीं है तो फिर पता नहीं, क्योंकि ये रहा ना एक एक्वाडक्ट रूइंस. आई मीन रोजारियन रूइंस इसे भी बोल सकते हैं. ये एक्वाडक्ट पूरा जो नहीं बना था. शायद यहाँ पे हो. नहीं, यहाँ पे नहीं है. तो फिर कहाँ पे है? रोजारियन रूइंस. रोजारियन रूइंस. और कौन से रूइंस हैं यार? Three reads, redux jump, bond, blah 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 blah. Serpent cell, serpent scale, serpent cell. पता नहीं क्या बोल रहा था मैं. Lazarus district. कोई आइडिया नहीं है यार सही बोलूँ तो. विलेज मुझे इसलिए ही लगा था यहाँ पे होगा क्योंकि एक विलेज उस समय यहाँ पे था जब मैंने पहले पढ़ा था. Shit. मैं इस क्लास के लिए इतना खुश हो रहा था, फाइनली मालूम पड़ जाएगा कहाँ पे होगा. कोई आइडिया नहीं है कहाँ पे है. Cole said it was an army of Akashi. How are we supposed to do our duty when the hills are crawling with a... फिर से पढ़ता हूँ. ओ, ये एक बी क्लास है यहाँ पे. बी क्लास को भी मार दूंगा मैं. Urgent notice to all Coastbreakers. Due to the discovery of a fallen giant in the Rosarian ruins we have lately been investigating, all work in the region is to be halted with immediate effect. And all members are to proceed no further than the village gate, lest the echo should be awakened by our presence. No further action may be taken without Sid's express permission. Rosarian ruins, पता नहीं यार.
The greater part of those black shields who spied on Lost Wing were taken by the Aether fled. However, we have received reports that one yet survives, a zealot of their evil cause who persists in delivering any bearer who strays too close to his hiding place to a gruesome death. Alas, he has heretofore proved more than a match for the Curse-breakers sent to slay him. सीधे Lost Wing में ही है मतलब ये, तो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा. Around the woodland passes of the Empire are real enough. Woodland passes इसका वो याद रखना होगा. Urgent call ये इसका समझ में नहीं आ रहा. Rosarian ruins का है. अभी के लिए वो Lost Wing जाता हूँ और वहाँ पे मार देता हूँ एक बंदा जो है ईथर फ्लैट्स से आकाशिक बना हुआ. चलो पास से यहाँ पे अब कहाँ पे है वो, ढूंढना होगा उसको. वो है कि यहाँ पे ना तो मैं अपने चॉकोबो को खोल सकता हूँ ना तेज चला सकता हूँ, तो इतने धीरे ही सबको इसे ढूंढना होगा. Scotland 871 clap bread, white pudding, smoked kippers, salt loach, stewed greens. मेनू इधर का. यार कहाँ पे है वो बंदा? ये उतना भी बड़ा नहीं है, मुश्किल नहीं होना चाहिए उसे ढूंढना. कह दिए यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है. हाँ पिछली बार क्योंकि कोई रोकने के लिए था ना मैं यहाँ पे. अब कोई नहीं है क्योंकि ये पूरा छोड़ दिया है इन्होंने लॉस्ट विंग को. अब यहाँ पे होगा वो बी क्लास वाला. बी क्लास वाला मेरा क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा वो तो. ओ नहीं, ये तो कुछ और ही है यार. ये कोई बंदा है कि नहीं? यस. होली ट्रम्पिटोर. चलो ये आकाशिक नहीं बना है. मुझे पूरा यकीन था ये बंदा आकाशिक बन गया होगा. ओह पैरी बहुत अच्छे है. प्रिसीजन डॉज नहीं कर. नहीं अभी भी प्रिसीजन डॉज नहीं था यार. मैं गया था, मैंने डॉज किया था उसको. इसको निकाल नहीं सकता इसके वजह से. ना ना ना. ये हो गया. जा 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 जा. मुझे 1.5 का करना है. 1.5 हो गया. 51. Yeah.
लगभग हो गया ये। मेगा फ्लेयर। ये नॉन स्टॉप आने में क्या ठीक है। ना 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 यार हील too slow। यार ओह ये लगभग होने वाला है मिनी स्टैक है। और इसको नीचे ला लो और फिर पुलिस स्टैगर कर दो। इतना आसानी से नहीं करने दूंगा मैं। इसका बाबा भूल जाता हूँ ये 2 बार करता है। ये मर जाएगा अब। ये बचने वाला। अंकित भाई स्ट्रीम में स्वागत है। बॉस फाइट नहीं ये एक हंट था। मिनी बॉस मान लो इसे। यहाँ पे हो सकता है कहीं पे। आपका दिन कैसा गया वॉल्टन भाई क्या बोल रहा हूँ अंकित भाई माफ करना। वेंट क्लियर व्यू ग्रेगॉर्स वीप ये पूरा का पूरा रॉयल मेडोज होली एम्पायर ऑफ सैनबर्ग में ही है। तो मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा वो एस क्लास वाला कहाँ पे होगा बॉस हंट। वेल मेन क्वेस्ट शुरू करते हैं। वॉल्टन भाई हमेशा लर्न करते रहते हैं। How are we supposed to do our duty when the hills are cruel? How indeed. कुछ नया? Wasn't expecting you back so soon. Is everything we've received and everything promised? 5 और रिनाउन चाहिए इसके लिए बस। Best of luck out there, Sid. चलो मेन क्वेस्ट शुरू करते हैं। Clive? लगता है आज थोड़े बिजी हैं वॉल्टन भाई। Where the hell is everyone else? Don't tell me. They're all right, but it's a long story. तो स्विफ्ट के साथ एक और बार खेलने का मौका मिला। Well, at least everyone's still breathing. Demonologist को खेलने का। As for these writings, I'm sorry to say, Clive, but if you had those, you'd be sitting under a pile of rubble. I know. But we were able to save a few bits and pieces from the ruins. सही है। Most of which ended up being used to build this place. आज रात चेक कर दूंगा। Personal items we gave to the next of kin. In the case of Sid's things, that would have been mid. Then I'll check the workshop. Like father, like daughter. Search Mid's dungeon. 0 out of 2. तो नया वाला खुला है या फिर? If Amber and the Lazarus are gone, then everyone in Port Isolde's in danger. Do you think Mid's ship will have a sail?
You saw that work of devilry on the deck, didn't you? आप काफ़ी म्यूज़िक भी लगाते हो, फिर वो ट्रांजिशन का भी गोल गोल घूमता हुआ फेस भी लगाते हो आप. This looks like it's from Sid's old diary. But you'll already have read it. I'd better keep looking. मैं ज़्यादा गेम प्ले का डालता हूँ एडिट करते, तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता. बेसिकली अगर मर गया तो वहाँ बॉस फाइट में मरा तो बॉस फाइट शुरू होने से पहले कट कर देता हूँ, फिर वहाँ पे जाता हूँ जहाँ पे मैंने बॉस को मार दिया, उस वाले रन को फिर चिपका देता हूँ. दोनों के बीच में बस क्या बोलते हैं, फेड आउट फेड इन और बॉस फाइट. मेरा ज़्यादातर वही होता है. पर थोड़े बहुत ऐसे होते हैं जिनके साथ मैं क्या बोलते हैं एकदम सीमलेस कट डाल सकता हूँ. जैसे गॉड ऑफ वॉर का मेरा जो था, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे जगह थे जहाँ पे मैंने सीमलेस क्या बोलते हैं एडिट कर दिया था. ऐसे लगता भी नहीं है कि मैंने एडिट किया, बल्कि वो मुझे वैसे जब करने का मौका मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है. स्टार वॉर्स के साथ भी वो ट्राई की थी, पर हर बार सफल नहीं हो पाया मैं. What do we have here? Oh, Sid's pipes. Something tells me Mid won't be needing these. Okay, continue searching Mid's dungeon. I know this is your hideaway, but you really shouldn't be in here. If Mid caught you rifling through her research, she'd have your head, then mine for letting you. That leather loosener was only the first of the discoveries the Alembic gonna help us make. Just you wait, Sid. Just you wait. सर्किट भाई नया वो लेवल 15 वाला खुल गया क्या? We've had no word from Canva for days. Please tell me Mid is all right. हाँ वो एकदम सही है मिड, टेंशन नहीं लेने का. I remember seeing this doll in Sid's cellar. I wonder if it was Mid's. Huh. What's this tucked inside it? Mid doll. I know you like riddles, so I reckon you'll appreciate this one. Of all my inventions, this one's the best. And so when choosing its place of rest, I recalled your opus, Daughter Dearest. And now it sleeps there in the first. I'm going to have to work on that last rhyme. Good luck. Riddle. Sid's best invention. Huh. That sounds promising. Ooh, hospital. Hospital spookies होते हैं बहुत. Something in Mid's first opus. But what would that be? Perhaps Otto might know. सही लेवल होगा वो. हॉस्पिटल बहुत स्पूकी होते हैं. ये वीडियो हॉस्पिटल वाला ही है ना, फिर तो मजा आएगा देखने में. Well, did you find anything? Possibly. You wouldn't happen to know what Mid's first opus was? Opus? That girl's as tone deaf as a banshee. Unless you mean the orchestrion. She couldn't have been more than what, 11, 12 when she cobbled that thing together? पिछला वाला वीडियो भी सेम जगह पे था क्या? Not least her dad. Cyclone Street. You should have seen how proud he was of the little scamp. What's that battered old box have to do with anything? I think Sid may have hidden something inside it. Wouldn't surprise me. Those two and their bloody treasure hunts. Old house, Cyclone Street, hospital. The orchestrion's in the tub and crown, but it's always been. How are we supposed to do our duty when the hills are crawling? Cyclone Street. वो भी एक घर ही है या फिर I mean Cyclone Street से तो लग रहा है एक स्ट्रीट है बस, पर स्ट्रीट में कैसे होगा एक मैप? I didn't break it. Well, I didn't break it. What didn't you break?
Nothing. We didn't break nothing. We definitely didn't break the orchestrion. What's wrong with it? It's broken. Except when it isn't. देखता हूँ आप वैसे कब खेलते हो? And you had nothing to do with this. Nope, nothing. We just wanted to listen to all the songs at once. So we pressed all the buttons. Like this. See? All too well. PS5 में ही खेलते हो ना आप भी या फिर PC में? Inspect orchestrion. Something caught on one of the gears. Did you break it? Can you fix it? PC only game. No, I mean, yeah, yes. हाँ वह छोटा गेम है उन. How about now? उन्होंने सारे कंसोल में करने मुश्किल होगा डेवलपर्स के लिए. छोटी टीम होगी ना. Fixed it. Yeah, new music. Never heard this one before. They started playing when I removed this. Whatever it is. Well, don't look at me. I can tell you it's important, though. Sid showed it to me once and said as much. Said it was the stuff dreams were made of. Let's just hope it's the stuff ships are made of as well. Indeed. Let's see if we can make some dreams come true. चलो ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा किसी दिन रात को जब खेलोगे. Just the two I was looking for. Aye. Who's a patient? Actually, yes. The Crown Prince just left. Dion left? Unless you've another word for stood up and walked off. Yes. ट्विटर में या कहीं पे मैसेज कर देना जब करोगे. देखता हूँ अगर to leave a message with Obelisk before commandeering one of his dinghies. वीकडेज में तो कभी-कभी 8 बजे के आसपास पहुँचता हूँ काम करने के बाद. He's free to do as he sees fit. I'd rather he did so in bed. His wounds are nowhere near healed. Much like yours, I suspect. Otto told me what happened in Canver. What is it with this realm's princes and their aversion to rest? Ask me when I get back. Though I may be sometime. Then at least try to stay safe. And if that fails, try to stay alive, eh? Every moment I waste here, the further the flagship sails. I have to get back. सॉन्ग ऑफ होप करूँगा पहले उसके बाद ये इसके लिए आता हूँ. ये एक और कोई प्लस है. ब्लैकस्मिथ. ओह एक नया उसका फिर से. ओह यहाँ पे एक और भी है. मॉर्वोल से लड़ना होगा उसके लिए. ना भाई ना. आयरन वर्क्स के लिए कहाँ जाना है? जहाँ पे वो जहाज था छोटा सा. वैसे अंकित भाई वीकेंड क्या किया आज? ये सैटरडे संडे खत्म होने वाला अभी. तो क्या किया इस वीकेंड?
Clive. My dad had it all worked out. He'd be proud of you, Mid. His writings may have helped, but this achievement is all yours. Can we catch क्या them? शॉपिंग की? The Aina is one of the largest, fastest vessels ever built. Any other ship would be hard pressed to keep pace with her, let alone reel her in. But this isn't any other ship. This is the Enterprise! And the world's never seen anything like my dad's engine. It certainly hasn't. Clive, what do you know of Barnabas Tharm? Only what the bards sing. That he sailed to Ash from southern lands. That it was his mastery of the blade which won him the throne. And that his sword, Odin's sword, can sever the very threads of creation. But don't lose any sleep over a last tilt. We'll do what we must to survive. What we must. The light! I thought this cove was meant to be hidden. Mobile accessories. क्या mobile accessories ली? Mid! Company! Eh? We'll hold them off until the ship is ready. But hurry! Bollocks! All hands! Man your stations! Everyone with me? तो मोबाइल एक्सेसरीज सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो मोबाइल कवर आता है, उसके अलावा पता नहीं क्या। ईयरफोन शायद वो भी मोबाइल एक्सेसरीज में आता है क्या? Here they come. Oh wow. Mid needs every moment we can give her. Behind Hello. I'll take care of these fuckers. Behind you? I'll have you know, Earthbreaker here once struck fear into the heart of every man in the Clintons. मारो, सब मारो। Oh. About that offer, Cav? How are we doing, Mid? I thought you said that ship was fast! I'm gonna get. Oh? I haven't felt this alive in 20 summers. Come No. on then! Which of you lot fancies meeting Ogre Killer next? I thought it was called Heartbreaker. Back, और क्या? और आ रहे हैं और एक बड़ा वाला आ गया, मेरे हिसाब से ये आखिरी होंगे। इसे फिर भी मुझे मारा। इन सबको अब बस एक ही बचा है ना। ओह नाइस, सिपाही का देश है। नहीं, इतना आसानी से कर दूंगा। पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। तो डेफिनेटली नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूँ। तुमने देना अंकित भाई, ये इसे थोड़ा मारने दो, थोड़ा बात करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, सही बोलूँ तो इसे मारने में।
आसानी से नहीं करने दूंगा। गलत टाइम पे इस्तेमाल किया है ये हमला। अलविदा। एक न्यू केबल पीसी यूज टाइम के लिए। कैसा केबल लिया आपने पीसी के लिए? क्या केबल चाहिए? That was easy enough. All right, you lousy lot. Get your asses on board. She's ready to sail. You heard the captain. Clive? क्या इसे मार दिया था हमने? But I thought he was... Confounded. Then it is as I feared. Sleipnir is no man, but a creation of Odin. Well, fuck. Phone charging C to lighting. कौन सा फोन है आपके पास? Phoenix's fiery fundament. Have you no normal enemies? Up for another round? Of course we are. Right, Lord Rosfield? A boy, there was a time people called me the Executioner. Those are my odds. No matter, heads will roll, all the same. Mate! New plan! You leave! We follow! Follow? Swimming, are you? Oh, bugger me! Weigh anchor! Engine's dead slow ahead! मेरे पास आईफोन नहीं है तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, सही बोलूं तो फोन्स का उतना मुझे आइडिया नहीं है। Have care, my friends. It is not blood that runs through an Eddie's veins. These foes will not fall easily. But they will fall. Like oaks before a woodman's axe. मैं अपने फोन्स को बहुत ज़्यादा तोड़ता हूँ तो मैं कॉस्टली फोन्स खरीदने वाला हूँ नहीं। मैं क्या करता हूँ ना, ये फोन्स को जब भी थोड़ा क्या बोलते हैं कुछ करने का होता नहीं है तो मैं फोन्स को अपनी उंगली में घुमाता हूँ तो उसके वजह से कई बार स्क्रीन वो सब टूट जाता है मेरा। मैं बल्कि वो ठीक भी नहीं करता हूँ यूजुअली उसके वजह से। पर एक बार मेरी मम्मी क्या बोलते हैं बोल रही थी स्क्रीन ना टूट गया ठीक करो, और मुझे लेके गई ठीक करवाने के लिए। फिर अगले दिन वो लेने गया और बाहर निकलते ही गोल घुमाने लग गया और वहां पर ही जहां पे ठीक किया था उसके बाहर ही नीचे गिरा, स्क्रीन टूट गया। सब मरो, सब मरो। कितने हैं यार ये लोग? सही टाइम पे ये कटसीन शुरू हुआ। पहले मैं तो कुछ भी घुमा लेता हूँ, बल्कि क्या बोलते जब मैं कॉलेज में था तो अगर मेरे हाथ के पास बुक्स नहीं होती थी, फोन नहीं होता था तो बुक्स को घुमाता था। और अभी जब काम में खड़े रहता हूँ, काम करते रहता हूँ, अगर फ़ोन नहीं है तो मैं अपने एक छोटा टॉलिया ले जाता हूँ, उससे घुमाने लग जाता हूँ। बेसिकली हाथ के पास जो भी होगा उससे घुमाने लग जाऊंगा मैं।
Enterprise escaped. Now, mate! Alright, engine full ahead! आपके ऐसे कोई हैबिट्स हैं क्या? अभी अगर मेरा फोन देखोगे ना, जो मेरे पास अभी करंटली है, इस साइड पूरा का पूरा क्रैक्ड है, दोनों साइड में आधे से ज्यादा क्रैक्ड है पूरा. What do you want? That's quite a mess you've made. And wholly unnecessary. You are my offering to Mythos. I would not see you damaged. Now back to your stations! Every bell spent treading water puts another league between us and the galleon. ऐसे अंकित भाई, आप कोई स्पोर्ट्स फॉलो करते हो क्या क्रिकेट के अलावा? अगर क्रिकेट भी फॉलो करते हो तो I don't suppose Mid has a spare engine? Since you rose from the grave, my fortunes have plummeted. Are you absolutely certain of this quest of yours, Clive? The foes you face are as terrible as they are numerous. Aye. And they'd have us live and die on their terms, which should answer your question. Ah. You have that same stubborn look as your father did when he set his mind to something. On the battlefield, I am but a single axe. A deadly one, mind, but a single one nonetheless. आप बुक्स पढ़ते हो ना थोड़े थ्रिलर वो What you सब? require is 1,000, and I believe my old friend in Brandalar can provide them. आपने ये कोई एक ब्लैक ऑप्स Take care, कोई एक Clive. I have many बुक सीरीज more के बारे में tales बोला of था your ना? father's exploits to share. And I cannot very well do that if you're dead. Again. Good luck, Uncle. And may fair winds attend you. As for you, Joshua, take care. I shall do my best, Uncle. Farewell, my nephews. When next you see me, it shall be with an army at my back. वेल आजकल ई स्पोर्ट्स के वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो स्पोर्ट्स ही है. लीग ऑफ लेजेंड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, डोटा वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, वो तो सबसे बड़े हैं. पर उसके अलावा भी ईवो होता है ना, ये फाइटिंग गेम्स का. मैंने लॉल के थोड़े देखे हैं मैचेस. किसी और ने किया होगा फिर. Well, you can't have him showing us up now, can we? We would never hear the end of it. कौन से स्पोर्ट्स का करते हो ज़्यादा? CSGO या फिर LOL जैसे, लॉल जैसे? Great God of mercy. वैलोरेंट भी काफ़ी क्या बोलते हैं व्यूअर्स ले रहा है आजकल. राइट ने 2 अच्छे क्या बोलते हैं ई स्पोर्ट्स गेम रिलीज कर दिया.
एक इनका लॉल का ई स्पोर्ट, और अब वैलोरेंट भी काफ़ी बढ़ रहा है। एक और ट्राई किया था पर वो गया नहीं, वो याद नहीं आ रहा कौन सा था। एक और गेम उन्होंने रिलीज किया था पर वो उतना गया नहीं, बड़ा नहीं हुआ जितना वैलोरेंट और लॉल गया था। नाम याद नहीं आ रहा उस गेम का। Oh. Blessed with mild currents and warm waters, the Narrow allows for swift travel to the Dominion, Oriflamme, and Stonehere, without having to circle through the dangerous outer seas. The Naltia Narrow. वैसे आपने लॉल खेला है कभी? या वैलोरेंट भी? आप क्योंकि FPS ज़्यादा फॉलो करते हो तो वैलोरेंट ही होगा। वैलोरेंट खेलते हो? Between here and Waloed, but any ship heading north has to round Zemeckis and put through the Narrow. Maintain our current bearing north-northeast, and we'll catch the Black Galleon before she vanishes again. What's to prevent her from circling around Ash from the south? With these winds in those waters, it'd taken forever and a fortnight to reach Stonehere. Mid knows what she's talking about, Clive. Better than any of us lot, anyway. I say we do as she tells. Sails on the horizon. She's ours. पर अब नहीं खेलते। Boys, full ahead, and keep those furnaces fed. क्यों कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक थे क्या? All hands, battle stations. गेम कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक था क्या? हाँ। जो ई स्पोर्ट्स वाले होते हैं ना, वो बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं सही में। Where one leads, so does the other follow. The bond of consciousness which joins them, condemning both to the same fate. Yet my every attempt to strike it from their hearts serves only to tighten its hold. वही कॉम्पिटिटिव के साथ वही होता है, लोग आते हैं जो कॉम्पिटिटिव में खेलेंगे नहीं, ये नॉर्मल वाले उसमें भी खेलेंगे और फिर भी एक्सपेक्ट करेंगे कि जो कोई भी वो नॉर्मल वाले में वो कॉम्पिटिटिव जैसे माइंडसेट के साथ खेले। उन्हें कॉम्पिटिटिव वाले क्या बोलते हैं माइंडसेट चाहिए, तो कॉम्पिटिटिव खेलना चाहिए उन्हें, और वो कॉम्पिटिटिव जितने खेलने लायक है नहीं तो वो नॉर्मल में खेलते हैं और फिर गाली देने लगते हैं जब लोग उससे कॉम्पिटिटिव की तरह नहीं खेलते हैं। सीधे ओडिन के साथ लड़ाई होगी क्या? ये देख के मुझे असैसिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग की याद आ गई। बहुत सही था यार उसका शिप का गेम प्ले, शिप में लड़ाई, बोर्डिंग, वो सब। आपने खेला कभी असैसिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग?
हाँ मैंने भी सुना था उसका रीमास्टर कर रहे हैं, थ्रू द मेलस्टॉर्म। Where did you hide her, Barnabas? और फिर मैंने उनका देखा है, ये क्या बोलते हैं, प्रिंस ऑफ पर्शिया का जो रीमास्टर था। सही में यार, वो इंडियन जो स्टूडियो थी जो उसका रीमास्टर कर रही थी, उन्होंने बहुत खराब किया इतना ऐसे करके। ये इससे पहले मार दो। और आ जाओ। और कौन आएगा? ओह, रॉयल टॉगन वाल्डर। उन्होंने चांस मिला था पर प्रूव कर दिया कि वो नहीं ले सकते, उस चांस का फायदा नहीं उठा सकते। और अब वो चांस उनके वहां से चले गया और मेन वो क्या बोलते हैं, मेन स्टूडियो के पास चले गया। वो होपफुली ज़्यादा अच्छे से करेंगे, क्योंकि सेंस ऑफ टाइम मुझे बहुत सही लगा था, बहुत अच्छा। वॉरियर वेटरन वन ऑफ माई फेवरेट गेम्स है। ये जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, ये क्या बोलते हैं इसके, बीटेक के, उस समय मैं हॉस्टल में रहता था, तो मेरे पास पीसी नहीं था, पर एक बंदा था उसमें जो लेकर आया था पीसी, और उसके पास वो था ये द टू थ्रोन। बहुत अच्छा हो गया था मैं उसमें। ओह शिट, कहाँ जा रहा है तू? प्रॉब्लम बस उनकी नहीं है, उनकी वजह से दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे जो कंपनीज होंगे ना, उनको लगेगा कि इंडियन जो डेवलपर्स हैं, गेम डेवलपर्स, वो ये ठीक से नहीं कर पाएंगे। ओह शिट, क्या कर रहा हूँ? मैं इसे मार सकता हूँ अभी। पहली बात, इंडिया में मुश्किल है ये गेम डेवलपमेंट करना, और उसके ऊपर से उन्होंने खराब कर दिया पूरा रेप्यूटेशन। पता नहीं अब कब मिलेगा फिर से चांस से इंडियन स्टूडियो को बनाने का। होपफुली कोई और स्टूडियो, कोई और बड़ी स्टूडियो जो है वो इंडियन डेवलपर्स को एक चांस दे देगी। Oh, don't worry. इंडियन स्टूडियो से आ रहे हैं। आपने कभी राज जी खेला है?
यार अबे यार छोटा गेम है पर मुझे मजा आया था। अबे यार सही में मरना चाहता है, ठीक है ये मारो सब। बहुत छोटा गेम है, मैंने एक सीटिंग में ही पूरा खत्म कर दिया था जब खरीदा था। 4 घंटे भी नहीं लगे थे शायद। एकदम छोटा गेम है वो। ऑफ कोर्स सारे चीजें इकट्ठा नहीं किए पर फिर भी जा जा जा। ओह शिट, ये बड़ा वाला आ गया। मारो। वो ये पर मैं ये भी है ना, मैं इससे वीकेंड में ज़्यादा खेलता हूँ अभी, तो मैं ज़्यादा देर खेलता हूँ। अब पहले तो इससे भी ज़्यादा थी। जब मैंने बीटेक ख़त्म किया था और ये MBA के वो क्या बोलते हैं सेमेस्टर शुरू होने का वेट कर रहा था, तब इससे भी ज़्यादा खेलता था मैं। डेस्टिनी सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनी खेलता था मैं तब, तो बहुत ही ज़्यादा खेलता था। बेसिकली सुबह 10 बजे उठता था और उससे सबसे पहला काम में ये अपना PS5 नहीं सॉरी उस समय तो PS4 था, मैंने इसे डॉज किया था यार। हाँ 10 बजे उठ के रात के 4 बजे तक मैं खेला करता था नॉन स्टॉप। वो आजकल वैसे नहीं करता हूँ, पर वो कुछ ज़्यादा ही यार। पहली बात ना तो समय है मेरे पास और ना मैं वो करना चाहता हूँ अभी। हालत इतनी ख़राब हो जाती थी, मुझे पूरे दिन नींद आती थी पर मैं गेमिंग नहीं छोड़ना चाहता था। अबे यार क्या कर रहा हूँ मैं, पीछे दौड़ नहीं कर पा रहा हूँ। मारो कहाँ है ये, इस बंदे को मारो पहले। स्टोन स्किन थोड़ा लगाना होगा मुझे। Oh shit, wrong. बच गया बच गया बच गया। हाई पोशन फिर से। ऐसे गलत दिशा में हुआ यार। गलत। फिर से मिस हो गया मुझसे। ये डॉज बहुत ही खराब जा रहे हैं इससे सही में। सारे पोशंस इस्तेमाल हो गए, 2 हाई पोशन भी इस्तेमाल हो गए। आप वैसे एक बार में कितना समय खेलते हो अंकित भाई?
वो भी ले लेता हूँ उधर जो है आइटम। कोई बॉस फाइट ना हो यार, बस मेरे पास कोई भी पोशन नहीं बचा है क्योंकि ठीक है। मैं किधर से आया था? इधर से ही आया था। ओ यहाँ पे कुछ है। अंकित भाई आज ही मैं 60 पे पहुंचा हूँ। बनाऊंगा मैं उसे 1-2 दिनों में एक और थैंक यू वीडियो। आपने भी मुझे सब्सक्राइब किया यहाँ तक पहुँचाने के लिए, उसके लिए भी धन्यवाद। हाई पोशन एक सही है। और फ्यूरी वैसे भी प्लान था ये 60 का पहुंचने का। मैं बस 61 के लिए सही बोलूँ तो मैं इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि क्या पता कभी कोई एक 60 पे हूँ, थैंक यू वीडियो बना दिया और किसी ने सब्सक्राइब कर दिया और मैं 59 पे पहुंच गया, तो इसलिए 61 का वेट कर रहा था और 61 भी आज ही पहुंच गया, तो बना दूंगा 1-2 दिनों में। Oh shit. अबे यार Jill! You came. Get back. Clive, how did you? I'll explain later. Hands. मैं 100 तक नहीं पहुंचा हूँ, ये 1000 की कैसे बात करूंगा अंकित भाई। मेरे हिसाब से मैंने सुना है फर्स्ट 100 शायद मुश्किल होता है, फर्स्ट 100 मुश्किल होता है, उसके बाद 1000 ज़्यादा आसान। Phoenix, are you not the dominant of fire? I see naught before me but a guttering flame. Odin. Odin. In earnest then. रोक पाएगा? अरे डिफ्लेक्ट कर दिया, रोक नहीं पाया। ओह शिट, क्या हमला था ये? पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की याद आ गई। अगर याद होगा वो बोलपुल वाला जो हमला था, उसकी याद आ गई मुझे। एक शिप गया। कितने देर तक ऐसे रहेगा? मोजेस बन गया कि मोजेस है कि ओडिन है ये?
Can you go on? I think so. But to where? मोडिन आ गया। मोडिन, मोसेस और ओडिन का मिलन। मोडिन। ओ, मुझे लगता है इसमें भागना पड़ेगा। What did you do to Joshua? The Phoenix? Oh, I expect he will survive. This consciousness in which you coil your feeble souls is grown thick with desperation. And thus has my master turned to my blade. अल्टीमा के आर्क को देखना है अगर आज के गेम प्ले में आया तो आज के स्ट्रीम में। The world will soon be painted in black. डिजाइन बहुत अच्छा है All that live shall gather in पर नाइटमेयर इंड्यूसिंग टाइप के उसके आंखें अल्टीमा के। Not if we remove the cause of this misery. Not if we destroy the last of the mother crystals and restore balance to the world. Come. Do you truly think it's so simple? The blight is inevitable. Not even the Almighty might stop its endless march. Your efforts will avail us naught. Naught, that is, but suffering. You must embrace the truth, Mythos. Accept your place with the Lord. Keep it. As long as there's a chance, there's a choice. Ever led astray by your blind resolve. मुझे एफ्रीट बन के खेलना है। एफ्रीट के गेम प्ले बहुत मजा आता है। दिखने में भी बहुत अच्छा होता है एफ्रीट का और खेलने में भी। The inevitability of your divine fate, however much it may hurt. Get as far away as you can. Clive, no. Trust me, Jill. वैसे आपने जितने गेम्स खेले उसमें सबसे टेरिफाइंग जो कैरेक्टर है आपके कौन सा लगा? ओह शुरू होते ही हमला। We don't have to do this. Oh, but we do. If only to remind you of what मेरे पास हीलिंग भी नहीं है कोई। Rise, Mythos. In the short time since our last meeting, you have grown much. Yet as a vessel, I fear my Lord will still find you lacking. इसने मुझे पैरी किया बंदे ने। ओके, सबसे डरावना कैरेक्टर नहीं तो सबसे डरावना गेम कौन सा खेला है? Oh fuck. No. मुझे ये इस्तेमाल करना होगा। Oh shit. If reason cannot sway you, there are elements of persuasion that might. Yeah.
Nemesis from original RE3. RE3 खेलने वाला हूँ वैसे मैं. Shit. Raise your guard. Shit. बहुत ही कम कर रहा हूँ यार ये. Shit. मैं मरने वाला हूँ. Shit. मैं मरा. रेसिडेंट इविल 3 मैं भी खेलने वाला हूँ. देखता हूँ कैसे होता है नेमेसिस उसमें. Do you not see? Your iron will weighs you down, dragging you ever further from your purpose. And what is my purpose? Mythos. Who are we? What are the dominants? The breath of the Creator still warm on our lips. We carry his light that we might guide the masses in his name. We are but mighty acts of God. Acts of God. We are more than that. You would be nothing without what he has granted you. The power we wield is his, and yet every time we draw upon it, it wears away at our very being. It breaks us. It unmakes us. That its immaculate स्ट्रीम में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. itself. The icon. मिलते हैं फिर से. और आपके वीडियो का इंतजार करूंगा आज रात. एक नया. Apart from you, Mythos. नए मैप में. You wield the might of many. Yet your body does not answer for its avarice. What are you saying? What I am saying is that we dominants are a means to an end. We were created for you, that you might drink deep of our strength and thereby fulfill your divine purpose. Which is? To feed. As you would know, could you only look beyond the walls of your prison of self-regard. As long as you choose to ignore this, you shall never penetrate my defenses. Still, you may take solace in the fact that you are not alone in your plight. The chains of volition shackle all of mankind, but there is yet cause to rejoice. For the Lord, in his mercy, has taken pity on his flawed creations, and shall see them restored to their proper forms. And what exactly would that be? Why, loyal servants to God. No. Manners, Lord Rossfield? They are men, like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. You mean to turn everyone Akashic? Not turn, Mythos. Turn back. For too long has mankind been led astray by their clamorous wills. It is time they return to a world of quiet equality, where they might once more know salvation. Salvation? And abandon everything we hold dear? We don't need your salvation. We'll save ourselves, and we'll do it on our own terms. Not yours. And not your gods.
With every defiant expression of your will, the tighter the chains of consciousness become. But perhaps that fact may be put to use. Clive! The faster it binds you to the remaining dominance, the stronger your hunger will become. Until it leads you back to the only answer there ever was. Mayhap not by the path my master intended, but back all the same. Ash is not far. I could freeze a path. You're in no fit state. Probably not, but I can try. Don't look back! क्लाइव वेस्टेड उसका दे रहे हैं ये 40। अगर मैं वो कर पाता और एक्चुअल में अगर कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं वो बार को पूरा ख़त्म तो क्या होता मैं सोच रहा हूँ। ऑनलाइन चेक करना होगा क्योंकि मैं तो नहीं कर पाया। The others are safe. The Enterprise was clear of the gap when we fell. They made it, Jill. And they will have seen the ice where it led. We need only wait till dawn. This is the second time Barnabas has bested me. I'm powerless against him. And maybe there really is nothing else for it but to give yourself to his master. Only you won't do that. The Clive I know would never do that. So you believe? But do you really know me? If what Barnabas said was true, then I'm more monster than man. And each time I summon the flames from within, I burn away the things that make me who I am. Do you, though? Think of what you've used that power for. Of all the people you've saved. It doesn't matter how or by whom it was granted, only how you choose to use it. And you've chosen to use it for good, haven't you? I've also used it to kill. What if that's my purpose? What if it's all I'm good for? You're still that same boy I grew up with. Always so eager to save everyone around you, and yet always so lone. Because you failed to realize the one thing that needed saving most of all. You, Clive. You. You never once took the time to save yourself. Myself? I
think I might be beyond saving. No one is beyond saving, provided they want to be saved. You fight to survive. And you survive so that you may protect those you love. It's what you do. What you've always done. And I know you're not about to change. So I'm going to help you. To give you what you need to protect us all. Jill. Are you sure? If this is what you want, then... Don't worry, Clive. It is. This burden, I'll give you the strength to bear it alone. But I'm not alone. These burdens I carry, my sins, my pain, my sorrow, I see now that they are all a part of me. If I'm to continue on, having pledged my life to those I love, then I will gladly bear your burdens too, until my last breath. Clive. I promise you, Jill, we will find a way to escape this fate. Find a way to save each other. That we might one day look upon the moon again, together. And I promise you, Clive, that I will be there, no matter what you must become. I know. I never thought a smile could bring me so much joy.
What of Barnabas? Do we pursue him? No. Our paths will cross again soon enough. There is something we must do first. Of course. Drake's spine. The last mother crystal. The Einherja is at the bottom of the sea. Waloed won't dare move on Storm without her. But they know we're coming now. We'll need a plan. And a damn good one at that. Then let's go home and find one. Ash will have to wait. यहाँ तक पहुँच गए थे हम. इसको फोड़ने वाले आखिरी मदर क्रिस्टल ड्रेक स्पाइन. चलो अभी के लिए चलिए यहाँ पे फास्ट ट्रैवल करना है क्योंकि कहीं और ट्रैवल नहीं कर सकता मैं. Mid says Odin split the sea in two. She's always been partial to a tall tale. But there's tall, and then there's tall. I struggle to believe it myself. I see your uncle isn't with you. He stayed with the Enterprise. After our brush with the Einherja, she was in urgent need of repair. And my uncle knows a shipwright in Randalar. We're to join him there when we're ready to sail for Ash. You sure that's wise? Last I heard, the place was still overrun with Akashic. Show me a city where that isn't true. Ultima's plague is spreading. We're running out of time, aren't we? We've done our best to shore up that hideaway. But I doubt a few planks will stop what's coming. Still, we'll keep at it. Every little helps, I suppose. Let's hope so. Across the Narrow. The power of ice. Clive has claimed a portion of the icon Shiva's essence. Attuning with Shiva not only changes the elemental aspect of Clive's magic spells, but also allows access to several new yeah, हमेशा same चीज़ है. Shiva's feat Cold Snap can be used to swiftly move left, right, forward or back to either dodge attack or close in on an enemy. Basically ये उसी की तरह है, क्या बोलते हैं, इफ्रीत के हमले की तरह ही है. चलो. I should visit Joshua, assuming Talia will allow it. Oh fuck, no. New quests available थी के पास certain quests के लिए पहले ही करने देना चाहिए था मुझे. यानी कौन से quest में कर पाऊँगा, कौन से नहीं कर पाऊँगा. ब्लैक हैमर के पास नया क्राफ्टिंग रेसिपी है, बहुत अच्छा है. कितने सारी चीजें हैं यार, नोटिसेस. सेव करता हूँ पहले. शिवा चैनल्ड. अब बस एक बचा है, ओडिन. सेव करता हूँ. अमन में क्या आज के लिए यहाँ पर ही बंद करता हूँ स्ट्रीम. असल में थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ पर हालत थोड़ी सही नहीं लग रही है अभी, सही बोलूँ तो. पीठ में कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है तो मुझे आराम करना है. तो अंकित भाई, श्री भाई और वॉल्ट एंड भाई भी लर्क कर रहे होंगे कहीं पे. और उसके अलावा जो कोई भी आए स्ट्रीम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं आपसे अब अगले सैटरडे ही मिलता हूँ. तब तक के लिए अलविदा.